Good afternoon, everyone, and welcome to yet another insightful webinar by the ICSI from the webinar series on startups. I am CS Sonu Nahata, and I'm very pleased to take you all one step ahead today in the Institute's MSME and Startups Capacity Building Endeavor. I'm sure we're still rejoicing in the glory of our 55th Foundation Day, which witnessed the august presence of the two very important women leaders of our country, the Honorable President of India and the Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs. We did see that while both the dignitaries acknowledged the ICSI and the company secretary's contribution, creating an ecosystem that has facilitated growth and investment in the country, and mind you, they've talked about it loud and clear, they've also tasked us with the important responsibility of rededicating ourselves to strengthening the governance of India Inc. With India becoming the fifth largest economy in the world and the MSME and startups emerging as the key drivers of growth, our role as governance professionals is becoming more pronounced now. To stay ahead of the curve, it is imperative that we company secretaries understand the practical details of these two to scale up the good practices. So today's webinar, the third in the series, is an attempt to help us understand the valuation game that the valuation game of the startups that makes them investor appealing. And to help us unveil this, we have amongst us today a very seasoned professional and an angel investor himself, Mr. C.S. Manish Srivastava. Mr. Srivastava is a chartered member of the Indus Entrepreneurs, that is TIE, a global entrepreneurship organization with a focus on mentoring, networking, education, funding, and incubation. And he has served clients nationally and internationally. He runs an angel network himself and is the co-founder and director of Alpha Value Consulting Private Limited, a transaction and fund advisory company. With more than 15 years of experience in the valuation and transaction advisory domain, he's worked with companies like PwC, Stockholding Corporation, Citi Financial, and as a Category 1 merchant banker before starting his own venture. Besides this, his corporate profile, he is also a speaker at various IIMs and premier B schools of our country and is a mentor at the Atal Incubation Center, Niti Aayog, IIM Lucknow Incubation Cell, and ISB Hyderabad Incubation Cell. Now, without much ado, I would now request C.S. Manish Srivastava to please take over. Welcome. Hi, and thanks a lot, Sonu. And it's been my pleasure and privilege to be the part of this session. And so, first of all, special thanks to our president, Manish Gupta ji, Narasimhan ji, vice president, and to Ashish Mohan ji. And also special thanks to Rajiv Bajaj ji. And as we all know, we've been sitting in India, which has its own growth story. And the way the India is moving ahead and the way the new dynamics of the business are coming out. So the gone are the time when people used to say the value of the company being just based on the balance sheet of the company. And if there being a strong balance sheet, a strong value proposition it holds. Now it's more about a time we are living in where we talk about intangibles, where we talk about something which we cannot touch and feel, but it has a value. We talk about more like something more on the tech side, which can create value for the people, which it is not only like you do something and you create a value. It is something you are doing which is being useful for the citizen of the people, which is useful for the people in order to adapt it, in order to create a value out of it, right? So they're being like people who've been starting their own thing. They worked in various organizations, and now they feel that they should come out and they should do something which should create a value for the entire citizen of the people. Okay. Now, one important aspect is when we say startup, from where does startup grow the value line? From where it all starts? What is the tangent from which
the value being created out of it. Somebody today comes and says, I'm been thinking of doing this, this, and this. I have this idea. And at times it being seen that even the company at a pre-revenue stage, at a stage where there's no revenue of the company, but still it has a value. How it being created? What is the logic behind it? Right? We cannot go anything look into the financial number because there is no background, there is no history, there is no background. So how to look at what should be the value when we talk about, or even suppose you start something, you being at a bootstrap level, you are doing on your own, you are spending a money, suppose 10-20 lakhs rupees you invest of your own, and now you feel like this is the time where I should go and talk to some angel investor. And then what is the thing that angel investor will look at? Why he will invest in my company? What is that I will going to showcase to him? So I don't have any numbers. So the first thing, it is all start with the business model. Like, what is the business I've been talking about? What is the theme of my entire thing, what I want to do? What is the vision statement that I hold? Like, what is the future I can perceive and look at, that this is going to be the future in the time to come, right? So as we all see, like in this tech world, everybody is talking about AI. Everybody is talking about different sets of things, and it may be like the blockchain technology, it may be like somebody is talking about aerodynamics, somebody is talking about different things in different segments. If we talk about in the pharmaceutical, there mean a lot of clinical trial and clinical things that are coming up, and people are doing a lot of research. So this is the time where the entire world is looking at, like, what is new that India can create. And this is a story. And Chandrayaan has itself written a wonderful story. And this is the point where people are now realizing that, yes, India is something to be counted for, right? And the type of the leadership that we are seeing here in India, and the type of the prime minister that we have, the entire world has not even a single country has prime minister who is of such a cadre, who can talk at length to any place, who has a vision, who looks into like how the value can be created in the time to come. And there used to be the time when people say that India is a country jahan pe बैलगाड़ी chalti hai. And if you look at like the roads of India, the work on the highways and everything, and it's not being a far distant away, like when we see that the entire like the mobility thing will come on into the electric means electric vehicles and all these things, right? The petrol is going to go away, and that is the reason like why Dubai has thought of like it is not going to work that way just on the oil, we need to develop something, and that's why the tourism started. So that is the thing we need to pivot upon. That is the point where we need to look upon, like it cannot go this way. And it is not only about the startup companies. If you look into about the well-settled company, it may be the Tata, Reliance, they're also being very willingly looking at, I want to acquire those startups who are doing wonderful or great, right? So they have their separate department where they always look into, okay, which are the companies where they can invest, which we can handhold them, take it forward. So that department is basically corporate venture catalyst, I would say. That's a corporate venture department where they always look into. Okay, if suppose you being a fashion designer, and then there's an Aditya Birla group, and so they always been looking into like who are the people who been doing something extraordinary great, different things, different from different things they are making the product. There being one lady I met who been making the clothing from some waste materials, and this lady is doing extraordinary thing, and she also got an award as well from the ministers as well. So the question is like, what is the new that you are able to create out of it? Okay, and you talk into any of the sector, any of the segment, you talk into energy, you talk into EV, you talk into metaverse, you talk into any segment, all those segments, now people are working hard in order to bring or create a value.
like there used to be the time when we used to go to the airport, we need to show our identity. This is my Aadhaar card. And then they make us entry. They look into it. Okay, this is your Aadhaar card. And now there's an app called Digi Yatra. And if you go to Bangalore, if you go to Delhi even, so there's no need of like physical checking. The Digi Yatra app, you just reflect and show the app, and automatically the entry is there. Right. So this is how the game is changing. It is how the new value is coming up. Right. So these are the time we are into a VUCA word, I would say. When I say the word VUCA, VUCA is like we are sitting in a place which is very volatile. There's an uncertain time, and we already seen that into the COVID, like how the thing is. We have never thought even like we will come out of this uncertain time. That was a time that already 1 year happened and 1 year passed, and still the COVID was there. So we felt like, okay, it has to run that way. And now we're being totally free out of it. And Okay. come out how? Like completely a superpower, almost a superpower. Correct. So this is so when I say VUCA is volatile, uncertain, complex, and ambiguous. So this is the situation where we are living with. And there used to be the time, if you just go back about 10-15 years back, people used to say, you get a government job, and that is the most certain thing in life. And nobody, if you talk to the young guy today and say you go to the Punjab National Bank or you go to any bank and go for a job, he will say that what you are talking about. Are you insane or what? So this is the thing, like how it has all changed. Everybody now realize the value proposition. What is the value I've been adding to the system, right? So what is needed is we need to have you come from the VUCA itself. There need to be the clear visibility. We stand for visibility, then you for understanding, like we should understand where we are, things are going, then clarity, and then there need to be an agility. Agility means that you can change, you can pivot. There's a lot of confusion in the startup world. People say that I have one idea, I will do this thing. It does not go that way. You may travel a certain distance, then you feel that there's a need to pivot my idea. There's a need to change tweak my idea. And then you go further, and then you understand that, okay, that may be the right way to go forward. And then again, after third stage, you feel, again, there's a need for pivoting of my idea, right? So you start with something, you create something, and then you start looking forward for something else, right? So you take example like yes. So you take example like Flipkart, how it all started with. They started with just being the bookshelf company, online bookshelf company. We used to purchase the books online, and that is all it started with. And then it became a full e-commerce platform, right? So that is the evolution that has taken place, and it goes along with the time. Not even a single model of any company comes on the day one. It all evolves with the time, right? So this is a scenario that needed to be looked at, and we don't need to afraid about like what is right or what is wrong. Things will automatically evolve out of it. Okay, and so these are the key things that needed to be. So when I say, like, suppose somebody says to me like, how you value a startup, I just place one example to you. Suppose there's a person, Mr. Sundar Pichai, and Sundar Pichai says, I am leaving Google. Okay. And so I'm being starting something into the metaverse or anything. He comes new age tech thing. And he says that anybody who feel interested, he can invest 2 lakh rupees. I will provide a share of my company, maybe in decimal, but I will provide a share of my company. I believe that everybody who's been sitting over here, everybody will start thinking, okay, no, Mr. Sundar Pichai is doing, so he will do a great thing. And he was getting salary in crores and crores. So he's a great guy who has built Google Map and everything. So whatever he's saying is correct. And that is the legacy that he holds. And that is something, the value he holds in the eye of the people. So even if I don't have the money, 2 lakh, I will ask and borrow.
or somebody may go and also say that give a loan to me and I will repay it back, because this guy is saying it, so he will make the things, he will make $1 billion company, right? So where the value is residing, the value is residing in the people, value is residing in the experience of the person, value is residing in the tech he's talking about. It is residing in the suppose he has taken some patent, he has, so that is exclusive right for certain number of years. So these are the places where the value is actually residing upon. Okay, so even on a day one, he has not even decided or even yet incorporated a company. He has just thrown the idea that I will be starting a company next month, but the entire subscription amount will be received and people will say, no, I am ready to invest. So that is the beauty and that is the thing. So a lot of the time, it may not be the company where you look at. It may not be the company where you look at, but it may be like, who is the person behind that company that you look at. So frankly speaking, as an angel investor, you don't invest in company, you invest in person, right? Company may fail, but the person may pivot it, he may start something different, and then again that can be create a value. Okay, so more important is the integrity of that person whom we are talking about, who being the founder, who being the person, who being the front runner, and who is taking the game forward. Okay, so this is the most important aspect, like who is the person behind it, what is the team, as well as, like, a lot of people talk about like blah blah, I will do this thing, that thing, but at the end of the day, it is the execution which matters a lot, how you're going to implement it. And implementation itself seems like a theoretical concept, like how he will implement, he will explain this thing, but it is more about an objective function, like what is the experience he is possessing. The experience that he is possessing will translate into execution. He will translate all those things into actions, and those actions will result into the positive thing. Okay, so these are the important crux that we need to look at while valuing any company at the startup stage. Okay, another important aspect, somebody says that the value. Suppose the idea is very great, very beautiful idea is talking about. What should be the value that you should assign? It may run from 1 lakh rupees, it may go to 100 crores rupees, it may end to $1 million. What should be the value out of it? So it all depends upon, the value is not created on day one. The value is created over a period of time. You may have a beautiful idea. You may say the total addressable market is itna $1 billion. Okay, but you're not going to create that $1 billion in one day. You have to travel a certain phase of stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. So this is where you need to travel, and then the value keep on creating out of it. Okay, so you need to clear upon what is my stage 1. First thing first, today I've been starting something, I've been developing something, so at least like I need a money for moving forward 18 months. Okay, so this is the runway, what I've been looking at, and that's why I needed a certain money in order to run my show. Okay, so this is the important element, because a lot of people, I've been talking to a lot of people in the incubation cell. Somebody says, on day 1, I have even not created anything. He's saying, I will not going to dilute anything below 50 crore valuation. What is the logic for that? Why you are saying 50 crore? What you have created? What is the entry barrier that you have created? Entry barrier, that is what we say in this our word, startup word, that is called moat. MOAT, moat. That what is the value entry barrier that you have created? That suppose if you are doing something and some new person want to do the similar thing, then at least he has to spend 1 year or at least 1.5 years in order to move forward or to take or to get into the game. Okay, so that is the moat that you're able to create, and that creates some more value proposition. Okay? So these are the critical aspect and the critical element that you need to look at while valuing a startup. Okay,
Let me share my PPT. That will be more helpful. Is it perfectly fine? Yes. Okay. Visible. Okay. So there came a concept, lot of confusion that resides, like price and value. Are these same thing, different thing, or value is something different, price is something different? What is that? So price is what you pay and value is what you get. Okay. Suppose you go to a restaurant, suppose, and you said that, okay, aaj chole bhature khane hain. You go and order the chole bhature, and then once you have that, and then you realize that what is the quality of that chola bhatura. Okay, then you say that aaj खा के बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया इसको खा के. तो that is where जब आप कहते हो कि बहुत अच्छा लगा, it means that is the value that you're talking about. It is, you are not talking about कि I have paid 100 rupees for getting the chola bhatura. It is what is the value. Then you will say, next time again I will come to the same restaurant, right? So that is value, which is like not for this thing, but it is going forward for my next visit as well. Okay, so price is what you pay. You have paid 100 rupees, and value is what you get. You realize something more than that. Okay, आप कहते हो ना कि अपने सिटी में जाते हैं, वहां पे गोलगप्पे खाते हैं तो बहुत अच्छा बनाता है, मजा आ जाता है वहां गोलगप्पे खा के. तो वो जो आपको मजा आता है, when you saying मजा आता है, it means that you value it more than the price that you pay. Okay, so that is the difference, basic difference. Suppose, take example, uh, suppose a person has a marriage ring. He wears in his finger marriage ring, and the cost is suppose 1 lakh rupees, maybe because of the gold or maybe the diamond. And somebody comes to you and says, यार तुम्हारी मैरिज रिंग बहुत अच्छी है, ये मेरे को दे दो, मैं तुमको प्राइस दे देता हूँ, 1 लाख रुपीज दे देता हूँ. Will you going to give it? आपको no boss, there being certain sentimental value that being attached, there will be certain love and affection that being attached, and you will not going to uh, give it to somebody. So that is the reason, that is the value that you hold, right? It is not only about the price, it is the value that I hold, and that is the basic difference between price and value. Okay. So whenever we say that valuation is majorly like an economic worth or economic process, and based always upon certain assumptions and limitation. As you must have seen, like same valuation exercise that you provide, same set of documents to two different valuers. The value may be coming a little bit different from one value to the other value. Why so? The reason being because he is applying his assumptions and limiting factors, and the other value is applying his assumption and limiting factors. Because of his assumption, the value is coming different. Okay. I just place a small example which will help you. Suppose there being two companies, and these two companies are into the same segment, and same financial number dot by dot. The balance sheet, the P&L statement, everything is same dot by dot, no change at all. Okay. Now one company being run by a person who is 75 years of age with no succession planning, no son, no daughter, no succession planning, and another company with the same set of financial numbers being run by three professional directors, which may be in the age of 40, 45, 50 years of age. Okay. Now, if on a mathematical side, suppose valuation is mathematics. So if on a mathematical side, we need to value the two companies, we will say because the numbers are same, so the value should also come same. But there is a qualitative factor that being attached to it. If something happens to a person who is 75 years of age, then immediately the entire value proposition may change. So if I foresee the two companies, I would say the future projections of the company for a person who is who being 75 years of age, the projection is going to be totally different. Okay. For a company with the three professional directors, the projection is going to be different. And
So if somebody is doing it more as a mathematical exercise, then the valuation numbers will never able to make a correct assumption. So you're never able to provide the right valuation number, right? So these are the important factors. So it is about what the theme is, what is the story behind it, what is the logic behind it, what are the qualitative aspects behind it. So all these factors create a certain value for the company, right? So financial number, it can be done by anybody. You talk to a guy and who is just being into the 12th standard and you say that boss DCF का ये template है, DCF में आप ये numbers place कर दो and the value will come. He is just being a mathematical guy. He is not being applying the he is not doing the valuation. आप देखो कि lot of people, majorly like chartered accountant, company secretary, they being the valuers as and on date, right? But if you look into the most mathematical people, they being the IITians, right? अब वो IITian वाला valuation नहीं कर रहा है. अगर मैथमेटिक्स वैल्यूएशन मैथमेटिक्स होती तो IITian वाला कर रहा होता. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी क्या रिक्वायरमेंट थी? But the question is, it's more about logic. It's more about how you understand the entire game, how you understand the business model, and based on those, you draw certain inferences, and from your inferences, you find that, okay, this should be the value, okay? Another thing I would say, like when we started we being into this segment of valuation from the last like 18 years, and when we started doing it, I still remember that day one, around 15 years back, I had a discussion with one of the directors of EY, and I thought that I know everything in the valuation 15 years back. And he was telling me a lot of inputs. No, you need to look this thing, that thing, and this thing. And but still, I feel that no, I've been knowing a lot of things. But today, if you ask to me that what you know, I feel that I don't know anything. The reason being because as you scale up, as you understand, as you look into the complexities, as you go through a lot of the transactions, then you realize that there have been so many things that goes together. It is not only one thing, but it's a combination of the thing which works together. And that is where the experience comes into picture, right? So anybody who has sufficient experience, he may be able to give a justification to certain things, whatever he's saying. Otherwise, you will just keep on discussing on the Excel, that these are numbers, this is the value, but you are not discussing on like what from where these numbers are deriving, okay? So these are all the qualitative things that we need to understand. Before even starting the valuation exercise, what we need to look at, we need to understand a top down, we need to understand the industry. Then we need to understand the sector. And then we need to understand the company. So top down approach, the industry, the sector, and the company. So once we are clear on which segment and the industry we're talking about, then we able to say that, okay, this is where we are thinking in this particular format. Otherwise, you may go wrong because somebody suppose comes to you and says, today my turnover is only suppose 1 CR. And next year, my turnover is going to be 50 CR. You are say that you are talking about insane, you are talking insane thing. How can you in 1 year 50 CR? But maybe somebody who may be into this blockchain tech or maybe into metaverse, maybe in 1 year, maybe it go to the level of 50 CR. So it all depends upon the tech that you're talking about. It can scale fast. It can go across the globe in just a click of the button, right? So these all things help in understanding like how the value runs. What is the segment that we're talking about? What is the industry that we're talking about? Okay, so there's nothing like physical in this world as on date. Everything is digital now, right? Suppose if I develop one particular small software, okay, that may be the accounting software. It can go across the globe, right? There's no need of any physical transportation, okay? So that is where the new age tech thing evolve and how the value dynamics changes, right?
So I would say that before starting, do a lot of research, then identify the industry, the sector, then we need to do the SWOT analysis, focus on core strength that you have. Suppose somebody who has done a research or PhD in suppose biotechnology, and he's saying that he or she will develop some compound. Okay, then because of the nature of his or her study and the nature of the understanding he or she developed, and now she's talking about that creating a certain molecule. Okay, so that is syncing up with his core strength, what he or she has. So there being one of the lady I've been talking about, she being from IIT Delhi, she has undertaken PhD from there into the biotech, and she has developed one molecule. Generally when you say like कॉपर आप देखते हो कॉपर पानी पीना बहुत अच्छा है कॉपर के ग्लास में, बट आप जब उसको यूज करने लगते हो तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन वो ब्लैकिश सा हो जाता है. तो she developed the white copper, and she also got patented for that. And अभी there being एक वाटर टैंक आता है एस्ट्रल कंपनी का नाम है एस्ट्रल. एस्ट्रल के वाटर टैंक में ये व्हाइट कॉपर के ग्रैन्यूल्स उसके अंदर जाते हैं. सो दैट इज समथिंग व्हाट शी क्रिएटेड, एंड दैट इज हाउ द वैल्यू बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ दैट. ओके, सो instead of talking about valuation, we need to talk about value. कि आप कर क्या रहे हो, what is the value that you are creating, right? Then we need to identify the peer companies and look at the competition. Suppose today we feel, let's also develop something like Ola or Uber. Okay, so it's not easy thing. The reason being because the competition is so heavy. They have already traveled certain distance, certain stages, and now reached to this point. And if you start today, then you have to burn out. Your acquisition cost of the customer is going to be very heavy. And once the acquisition cost of the customer is very heavy, you're not able to survive in the market, right? Because the time has gone by. We are a lot of the discount. We used to remember that यहाँ से गुड़गांव जाना होता था, आपको कूपन मिल जाता था, you go just with 150 rupees, you go to Gurgaon, and now you try 1000 rupees from Delhi to Gurgaon, 1000 rupees. So that is the where they created the market, that they adhere. People now become used to. पहले people used to नहीं थे, उनको लगता था नहीं यार कौन इतना महंगा जाएगा, बट नाउ आज हमारे इम्बाइव हो गया हमारे अंदर कि नहीं नहीं वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो वहां जाना है, लेट्स डू इट, इट्स मोर सेफ, वी कैन. तो वो वैल्यू को क्रिएट कर दिया गया. This is how developed a niche market for themselves. develop the niche market and people are now used to, and उनको फर्क नहीं पड़ता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज चेंज हुआ है, कैश निकाल के अगर अपने पर्स से देना हो और अगर पेटीएम करना हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट. पेटीएम करते समय आपको पता नहीं चलता है और आपको कैश निकाल के देने में आपको दर्द होता है. तो दैट इज द डिफरेंस, एंड उसी साइकोलॉजी पे इसको प्ले किया गया, राइट? सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. Stage at which the business in which you want to board, and identify the angel investor and venture capital funds which are there, who are interested in your particular segment where you are working upon. अब सपोज मैं कोई चीज डेवलप कर रहा हूँ, वो चीज ऐसी है, सपोज विच हैज, सपोज मैं बना रहा हूँ, सपोज सैनिटरी पैड बना रहा हूँ. अब सैनिटरी पैड बनाने वाली कंपनी किसी लॉर्ड्स कंपनी के पास चली जाती है, लॉर्ड्स कंपनी का जो प्रमोटर उसके पास चली जाती है. अब वो एसी बना रहा है, वो उसको समझ नहीं आएगा, वो कह रहा है कि आप बात करो, मेरे को समझ नहीं आ रहा. तो वी नीड टू टॉक टू द राइट ऑडियंस, राइट इन्वेस्टर एज वेल, कि जिसको मेरी बात समझ में आए, who can understand, who understand the logic behind it and take it forward. Okay, so there may not there so there may be two set of investors. One may be the you can say financial investors, another may be the strategic investors. Okay, so financial investor is only being looking at the financial numbers, financial returns, and he's being very impatient as well. If something is not happening, he's not understanding that there may be the gestation period that being there, and it takes certain amount of time to develop something. Okay, but suppose there may be a strategic investor who may be a big player in your segment that you're talking about,
then he will understand your thing more. He will have more patience, and he will provide a more patience capital to you, right? Otherwise, if you talk into the angel investor, if you talk to the VC, micro VC, they've been very impatient people. They say that boss क्या हो रहा है, कितना revenue हुआ, next मेरे को next quarter में भी revenue नहीं आया, आप बोल तो ये रहे थे. These are all things being the things that goes on, right? So we need to be very careful while selecting the investor. होता क्या है, रिवर्स हो रहा है. इन्वेस्टर सेलेक्ट कर रहा है फाउंडर को सेलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टर. देन इट बीइंग वेरी इजी. मैं एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ. दे बीइंग वन कंपनी हु बीइंग इनटू द दिस साइबर सिक्योरिटी. जो कैमरे होते हैं, कैमरेस जो लगे हैं आपके घर में, ऑफिसेज में, तो उसको कोई भी जो है उसमें एंट्री ले सकता है. हमें नहीं पता है, हमारे बेडरूम के अंदर कैमरे लगे हैं, आपको लगता है बहुत सेफ है, बट लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग आउटसाइड एज वेल. उसके नोट्स ओपन होते हैं. सो वन कंपनी हैज डेवलप्ड a tech that nobody can able to enter into any of the camera thing, and so he has developed an encrypted model for that thing, right? So now the question is like somebody who understands technology, he will say that's a fabulous thing that you developed. Who does not understand, then वो कहेगा यार यूज ही कौन करते हैं, कैमरा कहाँ यूज होता है. That is maybe a different version of the things. Depends upon with whom you are talking about. Okay, and so now there being one fund who being willing to make investment into this company, and but they have taken a lot of time to make investment into this company, and then the founder has rejected the fund. So look at the beauty. It is not the investor rejecting the startup, but the startup is rejecting. He's saying that if you take so much time, we don't have so much of the time because we have to grow fast. Okay, and then they got the investment from another fund. So this is how. So we should not always run about the money that कोई funding कर दे हमारी company को. We should talk about other aspects as well, like मेरा सेल्स पार्टनर कौन होगा, राइट? मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ पे, उसकी ज्योग्राफी क्या होगी, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, ठीक है ना? एंड देन मेरा जो फर्स्ट कस्टमर है उसका एक्सपीरियंस क्या है. दीज ऑल थिंग्स हम उसको कैसे पिवट करें, चेंज करें, कितनी वैल्यू करें, क्या चीज उसमें एड ऑन करें कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड कस्टमर बने, राइट? Take example, one company, this is between the people here only, don't take it to the market. So just for understanding purpose, if you go to, suppose, even if you go to Haldiram, or even if you go to any of the local shops here, they provided you certain food to eat. You said, yaar, ye to acha nahi hai, this is not good. So they will not give a say कि नहीं अच्छा सर इसको छोड़ दिए मैं दूसरा दे देता हूँ. If you go to KFC, if you go to Domino's, if you go to McD and you say boss ये अच्छा नहीं है इस बार पता नहीं क्या, they will not hear the second thing. They will say just leave it, I am providing you next. Okay, second thing. So that is the difference in the customer engagement that been there. Okay, you order something on Amazon. Take example, you order something on Amazon, the Amazon like the product comes, you don't like, but that product is a not replaceable product, non-refundable product, maybe a replaceable but a not refundable product, but you don't like the product and you say that I don't need a replacement, I need a refund of my money. Okay, you talk to the customer care department of this Amazon, they will say that no problem, you keep the product by yourself and we are also refunding your money as well. Okay, this has happened to me 2 times. Okay, I purchased one bicycle for my child. The bicycle was not good. They said that in spite of the fact that the seller is not taking it back or refunding your money, you keep them or give it to somebody and we are refunding the money. So that is the customer engagement that been created, right? So people don't understand. People say, "नहीं boss, ये तो मेरा खाना खराब जाएगा, मेरे को नुकसान हो जाएगा." So you need to work that way.
then you create value in the eyes of the people. People don't feel now frightened while making a order on the Amazon. They say that okay, मंगा लेते हैं, देखते हैं, अच्छा लगेगा ले लेंगे, नहीं तो वापस तो हो ही जाएगा, 100% सिक्योर्ड है मेरा मनी, ठीक है. And that is the beauty that being created. Okay. So, but there are certain challenges as well when we say. Just a note, sir. I'm sure a lot of questions are there with the audience. So we'll take the questions and answers at the end of the presentation. So you can keep posting them. And once it ends, I'm sure he'll cover all of it. But then if you still have questions, please post them. We'll take at the end of the presentation. No problem. So whenever, like, even we can stop in middle and we can answer, but let it happen so that maybe in my presentation I able to give an answer to a lot of your questions. Okay. So when I say startup valuation challenges, yes, it's been very challenging. No historical background, at times no listed peer companies where you can say that I can apply any multiple, EBITDA multiple, sales multiple, or any PE multiple. Not much future visibility. So there's been a real challenge as well, right? Somebody comes to you and says that, boss, kitna paisa mange investor se? What should be the value of my company? Then you start realizing, boss, kitna hona chahiye? Okay. So that is the real challenge that need to be. Okay. This I already explained to you, top down and bottom up approach. VUCA I already explained that there's how the word where we are living with. Investment consideration. Now look at like investor क्या देखता है जब investor को invest करना है किसी, अभी हम valuation एक मिनट किनारे रख देते हैं. What the investor looks into, he may look into historical performance if there being any, maybe so company is 1 or 2 year old or 3 years old, then he may look into historical performance. Founder background and commitment, I already explained to you. The uniqueness of the idea, what you're talking about, that tech that you are talking about, that may be relevant as on date or not, it will go a long way or not. Business plan and growth estimates, funding ask current and future, what is the funding that you're looking for, and what is the deployment that you are going to do. Okay. Suppose somebody says that out of the entire money, suppose if I get 7 crores of rupees, I will spend the entire 7 crores in the marketing. It means what? It means that you are dependent on that funding and marketing. It means that your product will not speak of itself. You have to sell your product. You have to create an artificial market for your product. Okay. Potential exit probability, team expertise, that what the team is, whether the team being, and one important aspect is that being run by a single promoter, founder, or by a co-founders. It's always been better to have a co-founder because at least there may be 2 people whom you can catch and at least 2 people who may be responsible to. Okay. What is the competition in the market? Market perception and structure. Suppose as on date somebody comes to you and says Bitcoin में पैसे लगाते हैं, बढ़िया पैसा बनता है. अब आज की डेट में उसका परसेप्शन अच्छा नहीं लगा है, मार्केट पर परसेप्शन अच्छा नहीं है, और बिटकॉइन में तो लॉस ही होता है. तो नाउ टाइम वो चला गया, अभी वो सिनेरियो चेंज हो गया है. मे बी इन द नेक्स्ट टाइम अगेन इट स्टार्ट गोइंग अप एंड देन द पीपल स्टार्ट लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी. तो हर एक पर्टिकुलर फेज ऑफ टाइम में देयर विल बी सर्टेन मार्केट परसेप्शन जो प्रिवेल होते हैं, एंड बेस्ड ऑन द मार्केट परसेप्शन वी वर्क अपॉन. ठीक है. स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर इज. Now, key VC metrics. What is the key VC metrics that they look at when making investment? So VC metrics, one is the MRR, that is monthly recurring revenue. Nobody is more looking into like आपका revenue क्या है, but monthly recurring revenue क्या है. मतलब एक बार नहीं कि एक बार कस्टमर आया, आपने उसको बेवकूफ बना दिया और उसके बाद वो कस्टमर आया ही नहीं. तो वो रिकरिंग है कि नहीं है, कितने कस्टमर्स वापस लौट के आते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, rather than एक वैल्यू की एक बार आया, उसने परचेज किया और उसके बाद कभी नहीं आया. राइट. तो मंथली रिकरिंग रेवेन्यू एंड एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आपका क्या है. दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रैक्शन ऑफ द बिजनेस. कितने लोग आ रहे हैं, क्या यूजिबिलिटी है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. So keyword here is recurring, that is setup fees and other non-recurring revenue stream must not be included in that. Okay. Then second is average contract value, and next is average revenue per user.
So average contract value is more common when we talk about the B2B segment, कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, मतलब 200 रुपए की वैल्यू है या 500 वाला वैल्यू है या 1000 की वैल्यू है। आप जनरल कहते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में क्या हो रहा है कि आप सब्सक्राइबर्स को सब्सक्रिप्शन मॉडल बेच रहे हैं। आप कह रहे हो देखो मेरा, जैसे टेक एग्जांपल, आज लिंक्डइन है, लिंक्डइन का प्रीमियम है, वो कहता है मेरा प्रीमियम लेने के लिए यू सब्सक्राइब टू इट, ओके, ऑन अ मंथली बेसिस। वो आपसे 2400 रुपीज ले लेगा, then you subscribe and then you become the premium member, then there being certain additional facilities that being there, right? तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है जो कि B2B में चल रहा है, एंड एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कि एक आदमी से क्या रेवेन्यू आता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक पर्सन से रेवेन्यू क्या आता है एंड लाइफ टाइम कितना रेवेन्यू आ सकता है। सपोज ठीक, हम लोग बचपन से एक टूथपेस्ट करते हैं, कॉलगेट उसका नाम है। बचपन से हम लोग एक सोप यूज, अब तो बहुत से आ गए, लाइफ बॉय उसका नाम था। तो क्या हुआ कि दिस इज वेयर वी हैव लिव्ड 20 years 30 years ऑफ आवर लाइफ, राइट। तो आज वो एक लाइफ स्पैन में आप सोचो आपने 40 साल 30 साल कॉलगेट किया, और कॉलगेट ने आपको क्या दिया, आपको शेयर होल्डिंग दिया, आपको क्या कोई अलग से कहा कि ये आप इतने साल के कस्टमर हैं आपको मैं ये देता हूँ। उसने केवल एक चीज दिया, सेटिस्फैक्शन दिया कि हाँ यार इससे करते हैं मेरे को अच्छा लगता है, एंड दैट्स व्हाई आई डू इट। तो कोई कोई कहता है मैं लिटिल सोप यूज करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें नींबू का फ्लेवर है। सो दिस इज हाउ अ पर्सन, कंपनीज ट्राइज टू रिटेन द कस्टमर्स, ओके, थ्रू द वैल्यू प्रोपोजिशन। बट अगेन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एवरी प्रोडक्ट हैज अ लाइफ साइकिल। एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल में एक बार जाके वो वैल्यू उसकी डिमिनिश होने लगेगी, या लोग कम उसको यूज करेंगे, या उसका डाउनफॉल आने लगेगा। दैट मीन द रीजन कि अब बात कीजिए आप, सपोज कॉलगेट की, कॉलगेट के 12 फ्लेवर्स कॉलगेट हैज। if you talk to any of the product, everything has a flavors now, right? So because of this, if you been sitting in December, every year December the new model of the car comes, कोई 2022 की कार नहीं लेना चाहेगा। आज सपोज वी आर सिटिंग इन 2023, वो कहेगा नहीं 2023 मॉडल है। आपसे पूछा अगर जाता है कि कार आपकी कौन सी है, तो आप मॉडल बताते हो, मॉडल मतलब ईयर बताते हो कि 2012 की है, 2018 की है कि 2022 की है। सो इसमें एक एक अगर मान लीजिए दिसंबर चल रहा है तो कोई भी आदमी पुरानी नहीं लेगा, वो कहेगा यार नेक्स्ट आने दो, हम जनवरी में लेंगे, न्यू मॉडल आई विल टेक। ठीक है ना। तो दैट इज हाउ देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट टू क्रिएट सर्टेन शोकेस ऑफ द प्रोडक्ट कि हम कुछ नया लेके आ रहे हैं। आपने आज कार खरीदी, नेक्स्ट एक साल बाद देखेंगे उस कार में कुछ नया आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ कुछ ना कुछ नया एड ऑन करके वैल्यू को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कार उस वाले से बेटर है, राइट। देन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारी मिल्क वाली कंपनी आई और उन्होंने कहा कि कोई किसी ने बोला कि मेरा मिल्क तो आया में अहमदाबाद के द्वारा बनाया गया है, और किसी ने कहा कि हमारा मिल्क जो है वो सीधा फॉर्म से होके आता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग, कुछ ने कहा कि आप अगर मेरे मिल्क को सब्सक्राइब करते हो तो 2 पैकेट फ्री मिलेगा, राइट। तो 2 पैकेट फ्री क्या है, व्हाट इज द वर्ड फ्री, व्हाई यू गेट फ्री, इफ यू गेट सब्सक्राइब टू माय पर्टिकुलर थिंग यू विल गेट फ्री। तो दैट इज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एक कस्टमर को अक्वायर करने की कॉस्ट क्या है। तो सपोज आपको 2 पैकेट मिल्क फ्री मिले, तो मान के चलिए आपको सपोज कि 80 रुपीज 40 रुपीज मान लीजिए, तो 80 रुपीज आपको, तो 80 रुपीज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट दैट हैज गॉन इनटू, ओके। सो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द न्यूली एक्वायर्ड कस्टमर। हमने कितने एक्सपेंस सेल्स और मार्केटिंग में खर्चा किया और उससे मेरे को कितने फायदे हुआ, कितने नए कस्टमर्स आए। सो दैट इज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट किसी सेगमेंट में दैट मे बी वेरी एक्सपेंसिव, इन अ सर्टेन सेगमेंट दैट मे बी वेरी लो एज वेल। ठीक है, जैसे टेक एग्जांपल,
एक सलून में आप जाइए, सलून में अगर आपने बाहर लिखा हेयर कट 100 रुपीज, ओके, और फर्स्ट हेयर कट फ्री, सो व्हेन यू से फर्स्ट हेयर कट फ्री, तो हर आदमी एक बार टेस्ट करने जाएगा, और जब टेस्ट करने जाएगा तो अंदर क्या, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं था आपके हेयर कट करना, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, सर थोड़ा सा आपका ब्लैकिश लग रहा है, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा आपको ना ये करा लीजिए, आप फेशियल करा लीजिए, आप थोड़ा सा ये करा लीजिए, तो देन दे विल स्टार्ट सेलिंग द पैकेज टू यू, और वो 3000 2000 का ये पैकेज आपको सर्व करेंगे। फिर वो कहेंगे सर अगर आप मेरे को एक साथ 10 मंथ्स का पे कर दोगे तो मैं आपको जो है 2 सर्विस फ्री दूंगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्विजिशन ऑफ द कस्टमर दैट इज टेकिंग प्लेस, वो फ्री नहीं था। दैट 100 रुपीज और 200 रुपीज हेयर कट इज द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना। सपोज एक स्टेशनरी की शॉप कोई खोलता है और बाहर लिख देता है कि 1 पेंसिल फॉर एवरी चाइल्ड इज फ्री एट द फर्स्ट एंट्री, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, एक पेंसिल विच में बी ओनली 10 रुपीज कॉस्टिंग, उसने एक्वायर कर लिया कस्टमर को, दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। तो हर एक सेगमेंट की अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कोई डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट कहता है कि आप मेरे पास आते हो तो मैं आपके teeth का जो है एक क्लीनिंग फ्री कर दूंगा और समथिंग फ्री, तो दैट में बी द एक्विजिशन कॉस्ट, ही वांट टू शोकेस यू कि मेरी कैसी फैसिलिटी है, मैं कितना अच्छा करता हूँ, दैट इज द दैट वांट ही वांट टू प्रेजेंट इट टू यू, ठीक है ना। जैसे आप सोसाइटी में अगर रहते हैं तो आजकल क्या होता है, बैंक वाले आते हैं, बैंक वाले कहते हैं एक प्लांट आपको फ्री देंगे, एंड एक प्लांट फ्री देंगे, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल बताइए, एंड देन वो आपको अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। वो कहेंगे आप अपना बैंक अकाउंट खुला लीजिए, एफडी खुला लीजिए, एंड दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट, राइट। So that plant what they be providing to you free of cost, that is not free, that is the acquisition cost, ठीक है ना। Then there is a concept called churn. Churn is the lost MRR or ARR divided by the opening MRR by ARR. MRR क्या था, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू था। मंथली रिकरिंग रेवेन्यू जो आपका लॉस हो रहा है, आपने सोचा था ये आदमी आया, he will keep on coming but he has not stopped coming to you, so that is the lost MRR by or ARR divided by opening MRR by ARR. Right? So this is the number of people who have left it. And this is something very relevant for the investor. इन्वेस्टर आपका फर्स्ट टाइम कस्टमर नहीं देखना चाहता है, इन्वेस्टर आपका रिकरिंग कस्टमर देखना चाहता है। वो कहता है सेकंड बार किसको बेचा है, थर्ड बार किसको बेचा है, कितनों को बेचा है, दैट इज रेलेवेंट। कैश बर्न इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये दोनों मिला के आपका कैश बर्न होता है। आज की डेट में सीएफओ का अपॉइंटमेंट, सपोज आप मान लीजिए किसी ई कॉमर्स कंपनी की बात कीजिए, सपोज टेक एग्जांपल लाइक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम, तो वहां पे जो अपॉइंटमेंट होगा सीएफओ का, वो इस बेसिस पे नहीं होता है कि बॉस आप कितना सेव करोगे, वो कहता है बर्न कितना करोगे। अच्छा चलो आप 40 करोड़ रुपए बर्न करोगे, तो मेरे को कहाँ कहाँ पे पहुंचा पाओगे, किन किन ज्योग्राफी में लेके जा पाओगे, कितनी वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, ठीक है ना, कितने नए कस्टमर्स ऐड ऑन करके ले आओगे, ठीक है ना। तो जनरल पार्लेंस में जैसे आप एयरटेल यूज करते हैं या वोडाफोन यूज करते हैं, आपसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उस कंपनी की वैल्यू देखना है तो कितने सब्सक्राइबर्स हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, कितने लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है ना। तो दैट इज वेयर वी नीड टू लुक एट। तो कैश बर्न इज फॉर एनी बिजनेस दैट यू नीड टू रन, initial year में cash burn there can be because you have to create a visibility factor of your business, but in a longer run it cannot go seamlessly that you keep on burning and burning the cash, because at the end of the day you have to justify on a unit metrics basis that okay, this is the value I able to create out of the business that we have started with. The visibility comes, but at the end of the day you need to be clear enough, like what is the like you take example like Ola or Uber, now they are minting money. Now they are minting money like anything. The reason being because they have already gone through all those stages. They created like the marketplace what they wanted to, right? So this is a small presentation. I would say multiple by sector. Somebody start a business in one sector, suppose it's chemicals. Somebody start a company in apparels, somebody in household appliances, somebody in media. So the multiples are differently for different sectors and segments. Okay.
So I would say how to measure or value any company. So we generally value a company based on multiples, because future prediction anybody can build. Anybody can say that boss ये तो हम ये करेंगे, future हमारा ऐसा होगा. But suppose मैं कहता हूँ what is going to be your next year top line. May not be I'm talking about the bottom line or the profit. I've been saying what is the top line going to be in the next year. So you say that okay, next year at least like 3 crores I will going to strike. Then at least we know that okay, this is going to be at least the number. He been talking something on an optimistic side. Maybe if I talk on a conservative side, he's saying 3 crores, maybe at least like 1.5 to 2 crores he able to build. So then we look into like what is the multiple going into the particular sector or the segment, and we apply this EV by sales multiple or EV by EBITDA multiple or P multiple, and find like what should be the value of my company in comparison to these listed peer companies. Now there being one difference, I cannot apply these multiples directly with my company, because my company is a small company, these companies are big companies. Okay. Then another important aspect is, one is the size factor, another is these companies are marketable in nature. These shares are traded, listed into the stock exchange. Today I can purchase, tomorrow I can sell, and there is no problem of the liquidity. But suppose if I today go and make investment into a startup company or into a private limited company, I cannot take an exit out of it. Okay. So there's an issue which is called marketability issue. So I need to apply a discount, which is called discount on lack of marketability on these multiples. And then we say that, okay, after applying the discount, whatsoever the multiple that is coming, then we will multiply it with my numbers, which may be the EBITDA number, which may be the sales number, or which may be the enterprise value number. So then we able to get what should be the value of my companies. Okay. So these are the estimates that talks about the different sector and the segments, that what is the multiple going on, and these are majorly from the all the listed companies in this particular segment. Suppose if I say apparel, so we have taken like 25 companies into the apparel segment, which being listed peer companies, and we say that these companies on their inference, they are providing an average basis or on a median basis 1.7 or EV by sales, 12.1 EV by EBITDA, or P multiple 19.5. So if I say my company has a profit suppose of 10 CR suppose, then and I being into an apparel, so 10 CR multiplied by 19.5, okay, that is 195. So if this number suppose 10 CR, so 195 crore is going to be the value of my company. Okay. But here, instead of 19.5, I apply a certain discount on lack of marketability and then multiply it. Okay. But one thing that needed to be taken care, there being three things: sales, EBITDA, and profit. Sales is like a river Ganga when it is coming out from the Gomukh, which is very pure. There is not even anything which being added, any impurities that being added. So sales number are generally correct numbers. Okay. Nobody plays with the sales number. Now comes to the EBITDA. EBITDA is something you can say that the river Ganga has now reached to Haridwar. We are a little bit of the impurities that being added now. And when it reaches to the river Ganga reaches to Kanpur, it becomes the pat. And you say that everything now it's become more like a, you can say like a, it's become like a nala. So why this is happening? What is that? Because the promoter says to his chartered accountant, dear, टैक्स नहीं पे करना है, टैक्स वैक्स को नहीं आना चाहिए, बाकी सारा चीज ठीक है, 100 करोड़ का रेवेन्यू बहुत अच्छी बात है, द कंपनी इज डूइंग फैबुलस वेल, एबिटा चलो 8 करोड़ का एबिटा ये भी अच्छा है, चलो ठीक है, बट प्रॉफिट हमें अच्छा नहीं लगता देख के, तो या टैक्स वैक्स नहीं देना है, आप थोड़ा सा देखिए एंट्री जो भी की जाए. तो दैट इज हाउ द प्रोमोटर ड्रिवन कंपनीज आर रनिंग. एंड सपोज आपने उसका नेगेटिव पैट आया हुआ है, रेवेन्यू 100 करोड़ का है, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया पी मल्टीपल से, तो वैल्यू 0 आ गई. आपने कहा अरे सर आपकी कंपनी तो 0 है, तो कहेगा बॉस आपको कुछ नहीं आता है. तो द रीजन बीइंग बिकॉज जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आर नॉट द करेक्ट नंबर्स, नंबर्स आर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ.
So we need to look at those numbers which speak truth. So जब कोई भी कंपनी स्टेज पे आती है, जब वो इन्वेस्टमेंट लेने जाती है, तो बिफोर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट देयर इज अ ड्यू डिलिजेंस दैट हैपेंस, एंड उस ड्यू डिलिजेंस में ट्रायल बैलेंस को देखा जाता है। और ट्रायल बैलेंस में आपको समझ में आ जाएगा कि मार्च होने से पहले जनवरी से मार्च के बीच में क्या हुआ। इट्स बीन वेरी इजी टू फाइंड इट आउट। पूरे 9 महीने उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लास्ट के जब 3 महीने बचे हैं तो वो कहेगा बॉस अब तो को थोड़ा सा एंट्री विंट्री डालो उसमें। तो एंट्री विंट्री डालने से आप 3-4 जो मोटी एंट्री है आप उसको पकड़ लीजिए, आप बोलो कि बॉस ये वाली एंट्री का हमको लेके आओ इनवॉइस। देन आपको समझ में आएगा कि बॉस किस तरीके से प्रॉफिट को कम किया गया है, मैनेज शो किया गया है। तो ड्यू डिलिजेंस जब होगा तो वो ये चीज पकड़ी जाएगी उसमें। तो दैट इज वेयर वी नीड टू लुक एट कि अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो हमें किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लाला ड्रिवन कंपनी का हमें पैट पी मल्टीपल पे नहीं करना है। पी मल्टीपल वो सुसाइडल हो जाएगा। तो वी नीड टू वर्क अपॉन द सेल्स मल्टीपल और द एबिटा। एबिटा इज अ बेटर नंबर टू सेल्स। को भी क्या है कि अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है। आज मैं 4 गाड़ी माल सप्लाई करता हूँ, दुबई जाता है। किसी ने कहा यार मल्टीपल तो सेल्स में मिलता है, मैंने कहा कोई नहीं यार, 4 क्या 8 कर देते हैं तो वैल्यू डबल हो गई। तो इसको मैनेज करना इजी है, बट प्रोसेस करने के बाद एबिटा को ड्रॉ करना इजी नहीं है, ठीक है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो एबिटा इज अ बेटर नंबर टू प्ले विथ व्हेन वी से वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब वो कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो लिस्टेड कंपनी के तो सारे मल्टीपल वैसे ही अवेलेबल हैं, तो हमें किसी लिस्टेड कंपनी की वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पे मार्केट कैप ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इज द इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी, राइट। तो दैट इज वेयर वी नीड टू, हमें किसी से कंपेयर नहीं करेगा, किसी लिस्टेड कंपनी को कंपेयर नहीं करेगा। एक सिनेरियो हो सकता है वेयर वी नीड टू कंपेयर द लिस्टेड कंपनी जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है। लिस्टेड तो है बट देयर शेयर्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। इट मींस कि अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, इट मींस द प्राइस दैट बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, दैट प्राइस इज नॉट अ करेक्ट प्राइस। इट बीइंग अ मैनेज शो कि वो 4 आए बायर, उन्होंने आपस में खरीद लिया, सेल बुक हो गई, शेयर प्राइस मैच कर गई, दैट्स ऑल हैपेंड, बट दैट इज नॉट द रियलिस्टिक प्राइस। तो हमें तो उसको देखने का क्या तरीका है कि 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, अगर जो इतना वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ है तो वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, राइट। तो दिस इज हाउ वी नीड टू लुक एट, वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या वो नहीं है। ओके। Next important is the business model. A business model is an model should answer important question about your business and strong vision for the business. The key component of business model should talk about target customers, market, organizational strength, challenges, essential element of the product, how your product and service are financed, and how it will be sold. So this is all the things to talk about in your business model sense. Okay. So these are the 7 important factors of the business model. आइडेंटिफाई योर स्पेसिफिक ऑडियंस, ठीक है। जैसे सपोज मैंने कहा कि मैं एक स्वीट शॉप खोलता हूँ और जनरल पार्लेंस में आज की डेट में कोई भी मीठा खाना पसंद नहीं करता है। तो कहते हैं कोई यार ऐसी चीज हो जो मीठा तो हो, लेकिन अब वो कहते हैं कि कोई लीव्स आती है, हम उस लीव्स का या कुछ ऐसे लेते हैं जिसमें शुगर कंपोनेंट ना हो। तो नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज कोई ऐसी शॉप खोलता है जो मिठाई तो बना रहा है बट वो मीठी नहीं है, वो आपके लिए हानिकारक नहीं है। ओके, देन व्हाट इज हैपनिंग, एवरीबडी हु बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट विल बिकम द कस्टमर ऑफ दिस। ओके, सो वो आपको एक मार्केट सेगमेंट पता है कि हमें हमें किस लोगों को ये बेचना है, ठीक है। एस्टेब्लिश बिजनेस प्रोसेसेस, रिकॉर्ड की बिजनेस रिसोर्सेस, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, डिटरमिन की बिजनेस पार्टनर्स। जैसे सपोज मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट में केवल 4 लोगों के बैठने की जगह है। नाउ व्हाट द थिंग इज, मैंने कहा कि मैं अपना रेस्टोरेंट को जोमैटो स्विगी के साथ टाई अप कर लेता हूँ। देन देयर इज नो नीड टू हैव अ लॉट ऑफ द प्लेसेस इन माय रेस्टोरेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपली साउथ करके एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट के केवल 4 से 5 सीट्स होती हैं। आप वहां पे जाओगे, आप पहले वेटिंग करोगे, खाली होगा तब आप आके सेट करोगे। या आप देखो डोमिनोज ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो कभी भी वो
ऐसा नहीं था फाइन डाइनिंग का बिजनेस था, वो हमेशा वो था कि नहीं वो आपके घर पे पहुंचेगा, डिलीवरी सिस्टम था। तो बट उन्होंने समझा कि नहीं कुछ लोग हैं जिनको आके बैठना है, तो उन्होंने थोड़ा सा एक छोटा सा, कभी भी उनका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं होता है, ठीक है ना, डिमांड के बेसिस पे उन्होंने देखा यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो चलो यहाँ पे एक बड़ा खोल देते हैं, दैट मे बी दैट। बट उनका जो 80% प्रोडक्ट सेल होता है वो डिलीवरी मैकेनिज्म के थ्रू सेल आउट होता है, ठीक है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो ऑडियंस है वो क्या है। ये एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई का ऑडियंस कौन है? फर्स्ट क्राई में क्या मिलता है? फर्स्ट क्राई में बच्चों के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब बच्चों के प्रोडक्ट को खरीदने वाला कौन है? वो फादर नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग फादर होते भी आजकल हैं, लेकिन जनरल पार्लेंस में 80% मदर्स होंगी। तो मदर को क्या दिखाया जाए कि उनका माइंड अट्रैक्ट हो फर्स्ट क्राई की तरफ, ठीक है ना। तो उनका जो ऑडियंस है, बच्चा खुद से जाके खरीदेगा नहीं, लेकिन जो है मदर को अगर हमने शोकेस कर दिया, उसको इंपॉर्टेंस दिखा दिया, तो ऑटोमेटिक वो जाके वहां से खरीदेगा। तो दैट इज हाउ इट क्रिएट्स अ वैल्यू, ठीक है ना। उसमें कौन आएगा? उसमें एंडोर्समेंट करने के लिए अमिताभ बच्चन आएंगे फर्स्ट क्राई में। तो and because so many people, the entire India knows अमिताभ बच्चन, so automatically वो वैल्यू को क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एसी खरीदना है, एसी खरीदने के लिए आप किससे लेने जाओगे? आप कहोगे यार एलजी नाम सुना है, या वोल्टास नाम सुना है, या फिर मैंने वर्लपूल नाम सुना है, दीज आर द नेम्स दैट व्हाट आई नो एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब वहां पे जाते हैं, वो लॉर्ड्स का एसी बेचता है। लॉर्ड्स का एसी आपने सुना नहीं था, देखा नहीं था। देन लॉर्ड्स ने अमिताभ बच्चन को हायर किया और उनके फोटो को लगा दिया कहाँ पे? जब आप एक्सप्रेस वे में चल रहे हो तो पूरा इतना बड़ा सा एक्सप्रेस वे में लॉर्ड्स का एसी। लॉर्ड्स का एसी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इट इज द योर आई बॉल्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू द पर्सन, एंड देन यू सी कि यार अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है। तो वो दैट इज वेयर द वैल्यू बीइंग बिल्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पर्सन प्रोडक्ट की वैल्यू को क्रिएट कर रहा है, आपकी आई बॉल्स अट्रैक्ट होती हैं, आप जाती हैं वहां पे, एंड दैट इज वेयर इट क्रिएट्स मोर ऑफ द वैल्यू बिकॉज ऑफ द नेम एंड फेम ऑफ द पर्सन। तभी इसीलिए वो ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए ये सारे एक्टर और एक्ट्रेस आ जाते हैं। आज की डेट में आप देखो, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर मैं बोलूंगा मिस्टर सुनील शेट्टी, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में सुनील शेट्टी प्लेस कर रहे हैं। देन यू लुक इनटू लाइक युवराज सिंह, UV can, they have the separate setup to make investment into startups. So आज की डेट में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, शाहरुख खान की लड़की आती है टायरा, सो एवरीबडी इज नाउ coming up and taking stake into the startups because they understand कि ये एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, ये वो एसेट क्लास है जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट दे सकता है, इट कैन क्रिएट अ वैल्यू। सो एवरीबडी इज नाउ इंटरेस्टेड इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट नाउ, these days everybody is an angel investor। आप किसी से बात कर लो, हाँ यार मैंने भी 5 लाख रुपए डाल के रखा है, मेरे को अच्छा लगा, मैंने भी किया है। तो दिस इज हाउ नाउ एंटायर वर्ल्ड इज अंडरस्टैंडिंग कि यार यहाँ पे पैसा बनता है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है बट इट कैन क्रिएट मोर ऑफ द वैल्यू। ओके, यहाँ पे दो मैट्रिक्स चलते हैं जब आप बिजनेस मॉडल की बात करते हो। एक मैट्रिक्स आपका चलता है जहाँ पे आप तो जनरल पार्ले में रेवेन्यू क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी है। एंड फिर कैसे निकलेगा? अगर नाइकी का टोटल देखेंगे तो R=R1 R2 R3। R1 क्या है? प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं, एंड देन इट कम्स एंड कंबाइंस द क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ द एंटायर नाइक। ओके, नाउ दे मे बी टू सॉर्ट ऑफ बिजनेस। वन इज लाइक जो आप कहते हो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, आप कहते हो कि यार पेप्सी, मैगी, दीज थिंग्स, वाटर बॉटल 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज की जो चीजें हैं ये रन करती हैं वॉल्यूम पे, ये आपकी क्वांटिटी पे रन करती हैं। ये उस पर नहीं रन करती हैं कि इसकी बहुत हाई प्राइस होगी तो ये प्रॉफिटेबल होगा। दे आर लो इन मार्जिन बट दे रन ऑन वॉल्यूम बेसिस। ओके, आज मैगी आप जाते हो किसी प्लेस में, हिमाचल प्रदेश में या कहीं पर, आप एकदम टॉप पॉइंट पे जाके एक ही पॉइंट आपको समझ में आता है, उसका नाम होगा मैगी पॉइंट, राइट। तो अब मैगी पॉइंट वहां पे ऐसा क्या है, क्योंकि मैगी 10 रुपए की मैगी वहां पे उसको बनाता है, वो आपसे 50 रुपए चार्ज करता है, 40 रुपए
मान लीजिए 20 रुपए उसके उसमें लग गए, तब भी वो 20 रुपीज अर्न किया, राइट? दैट इज हाउ इट रन्स। अब आप देखो, जैसे ओमेगा हो गया, ठीक है, रोलेक्स हो गई। आप कभी जाओ डीएलएफ मॉल, और डीएलएफ मॉल में आप रोलेक्स या ओमेगा के शोरूम के सामने खड़े हो जाइए, हाफ एन आवर खड़े रहिए, आपको लगेगा बॉस यहाँ तो कोई आते ही नहीं है, ये कैसे चलते होंगे, यहाँ तो कोई भीड़ ही नहीं है। पेंटालून में जाओ तो भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पे कोई भीड़ ही नहीं है। तो आपको लगता है कि यार ये कंपनियां कैसे चलाती होंगी। दे डोंट वांट नॉर्मल कस्टमर्स, दे आर नॉट विलिंग टू लुक एट कि यार मेरे कितने फुटफॉल हो रहे हैं। उनके अगर महीने में 2 सेल्स हो गई, दैट्स मोर देन इनफ। कोई फॉरनर आया, उसने खरीद लिया कुछ, दे व्हाई दे बीइंग प्रेजेंट ओवर देयर, जस्ट टू शोकेस their particular showroom that this is where we are। हम एक लाइफ स्टाइल को बेचते हैं, दे मोर फोकस ऑन द लाइफ स्टाइल। वो लेके आएंगे शाहरुख खान को, वो लेके आएंगे ऐसे पर्सन को, ऋतिक रोशन को, जो लाइफ स्टाइल की बात करेगा, ठीक है ना। तो वो आपको अंदर एक वेल बींग की फीलिंग दिलाएगा, अच्छा मेरे हाथ में रोलेक्स है तो सबसे अच्छा हूं मैं। तो वो नहीं हो, वो डिफरेंट फैक्टर है, लेकिन मन में फील आता है कि नहीं मैंने नाइकी का पहना है तो मैं सबसे अच्छा हूँ। तो ये एक वेल बींग की एक फीलिंग को क्रिएट कर देते हैं, एंड दैट इज वेयर a person pays a high premium to that। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी कॉटन, सपोज टी शर्ट है, कोई भी कॉटन की टी शर्ट 400 रुपए से महंगी नहीं हो सकती है। हाईएस्ट ब्रीड ऑफ कॉटन भी 400 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता है, एक टी शर्ट का जितने का कपड़ा अगर बात करें। देन व्हाट गोज इनटू इट, कि वो नाइकी जाके वो उसको 5,000 में बेचता है। व्हाट ही, बिकॉज उसमें आता है कि ब्रांड विजिबिलिटी, ब्रांड इंडोर्समेंट, ठीक है ना। तो दीज ऑल थिंग्स क्रिएट अ वैल्यू फॉर अ पर्सन। तो उसको लगता है यार नाइकी पहने हैं तो हम यार एकदम मॉडर्न है, अगर मैंने आईफोन रखा है तो आई बिंग अ वेरी मॉडर्न सेट ऑफ गाय। तो वो एक फीलिंग है। बट रियलिटी फैक्टर अगर बात करें, जो लोग ट्रू लोग हैं, एक वैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि कई जगह मैं जाते रहता हूँ। आप आईआईटीज में जाइए, आईआईटी के स्टूडेंट को देखिए, कई सारे स्टूडेंट हमारे इंटर्नशिप किए, और उनके पास जो है, जो फोन होता है वो नोकिया का जो नॉर्मल बटन वाला फोन है, दैट फोन दे कैरी, एंड दे बिंग द टॉपर्स ऑफ द क्लास। और अगर आप किसी छोटे से इंस्टीट्यूट में जाइए तो वो हमेशा जो है एकदम किस्मो 1.5 लाख का फोन, मतलब इफ यू गो टू दिस यू रियलाइज दैट वेयर द वैल्यू रिसाइड्स। तो किसी के लिए वो वैल्यू है ही नहीं, और किसी के लिए वो बहुत वैल्यू है। जो रियल प्रोडक्ट है उसको लिए जरूरत नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा फैंसी और वो दिखाना है, उसकी वैल्यू उसमें है। आज मोदी क्या पहनता है, देयर इज नॉट नीडेड कि वो हाथ में रोलेक्स लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, व्हाट वो क्या लगाते हैं, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो उसकी वैल्यू को स्पीक करता है, उसका जो टैलेंट है, वो टैलेंट कपड़े और उससे नहीं आता है। दैट इज वेयर anyway, demand curve inverse relationship, so everything runs on this. If you want to increase the demand, you lower the price, it will move ahead। there are certain things जो कि आप प्राइस घटाने से भी उसकी वैल्यू को, आप कहते हो डायमंड की प्राइस अगर मान लीजिए 50% कल हो जाए, कोई कल खरीदेगा नहीं उसको, उसको लगेगा यार इसकी तो वैल्यू खत्म हो गई, बेकार हो गया है। तो उसकी दाम बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, right? डिमांड कर्व को थोड़ा सा अपसाइड किया जा सकता है विद हैवी मार्केटिंग, इंडोर्समेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। वो डिमांड को पुल अप कर सकता है, प्राइस को आप बढ़ा भी सकते हो अगर आप पर्टिकुलर लोगों को लेके आते हो जिसकी वैल्यू है मार्केट में। So now we talk about different approaches to valuation. General parlance में if you're doing the valuation of a company which being a stable company, तो आप ये approaches you place it. It may be the income based approach. Income based approach का मतलब you apply the discounted free cash flow, future based projection. Then asset based method, that is the balance sheet based method. Market based method, what I already explained, that may be the comparable company multiple method. It may be the EV basis, P multiple, EBITDA multiple, and all these things, right? So these are the various methods, but these methods may not be relevant when we talk about the startup company, because I don't have any. Suppose I take example. There is a tech-based company. They have nothing like an asset in them. Then they are at a very initial or infancy stage. I cannot compare it with any other company as well, right? Then so majorly what the value being driven,
we look into the future forward approach, what is going to be the future rollout and how the value is going to be. And based on that future, we look into like, okay, this is the value that will be there. Okay. Okay. So this is the law of economics, law of demand curve, you can say. And this is which explains everything. A person take a birth, a startup company, the person grows, become a child, then it grows, become an adult, and then it grows, become an old, and then it dies. Similar is the case of a product. It starts, it grows, it reaches to a stage, and then it starts depleting. And then you again have to find a new variant of the particular product. Okay. And there used to be the time, आपको याद होगा, we used to drive LML scooter. उसमें लगता था LML जो है बहुत बढ़िया आती है, LML is the number one scooter we have. आज की डेट में LML दिखती नहीं है, और दिखती है तो अच्छा भी लगता है कभी कभी देख के. तो सिनेरियो चेंज हो गया. आज की डेट में आपको ओला की स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया. तो वो इट ऑल चेंजेस विद द चेंज इन टाइम. एवरीथिंग इज नाउ चेंजिंग फास्ट. ओके. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब आप वैल्यूएशन करते हो तो आप एक चीज याद रखिएगा, an investor as well as the value of the company is residing on your operating assets, not on the non-operating assets. Suppose a factory, there being a factory, and this factory runs on 1 acre of land, and there being 5 acres of land which is idle. कुछ नहीं होता वहां पे वो घास वास लगी है, nothing happens. बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू है, बिकॉज द लैंड इज द कंपनी नेम. एक इन्वेस्टर जब आता है तो इन्वेस्टर का जो फोकस है, ही लुक्स एट योर फैक्ट्री, ही लुक्स एट द कैश फ्लो, ही लुक्स एट कि बॉस इससे कैश फ्लो जो क्रिएट होगा उससे मैं रिटर्न कितना क्रिएट होगा और कब मैं एग्जिट लूंगा. सो इट दैट लैंड ऑफ 5 acres which is an idle land may be relevant for whom? For the owner of that land, for the owner of the company, but that may not be relevant for the investor. इन्वेस्टर बोलेगा मेरे को फैक्ट्री में केवल इंटरेस्ट है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर एनी अदर आइडियल एसेट्स. ओके. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी लुक्ड एट. ओके. So valuation, it all started from Wealth Tax Rule 1957. So it's an entire umbrella. I'm not going to take one by one, but I'm saying from Wealth Tax Rule it started, and then ICI came into picture. It has provided certain guidance notes, and then it all come, and then it become the registered valuer provision came into picture, and then the registered valuer become now been getting appointed through IBBI, and that is how the entire rollout of the valuation has taken place. Okay. Now, one important aspect, like if you look at the books or the academic side, on an academic side, then there being certain formulas and say, I will apply this formula, I get the value. Like you say, like WACC, weighted average cost of capital. So it is a combination of the debt and equity. At what cost we are raising the debt and what cost we are raising the equity. And we say that, okay, this is the WACC structure. Okay. Or when you say like CAPM model, cost of equity, पैसा रेज करने में कितनी कॉस्ट आती है, what is the cost that being there in order to raise the money. So cost may be what is the expectation of the investor. Suppose investor कहता है कि मेरी expectation is 25% return on my investment. अभी 25% का नंबर कहां से आया? ये क्या उसके मन में लगा उसको 25% होना चाहिए तो आ गया? ये कहां से आया ये नंबर? तो ये नंबर आता है रिस्क से, रिस्क एंड रिटर्न. अगर मैं सपोज लिस्टेड कंपनी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता हूं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, तो जनरल एक्सपेक्टेशन इज कि मेरे को 17 से 20%, 70 to 20% का रिटर्न आई एबल टू ड्रॉ ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, नॉट ऑन अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बेसिस. नाउ आई हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट out of my hard-earned money and into a startup company, which is so risky. So 80% companies don't work, not able to create profit, and all these things happen. So I have a certain upside expectation over and above that, over and above 70 to 20%. I may say that, okay, at least I require 30% return.
if and that also depend upon the stage that you are in. Suppose एक बंदा कहता है सर मैं ना कुछ सोच रहा हूँ, आई बीन थिंकिंग, आई हैव सर्टेन आइडिया, आई नीड टू वर्क ऑन दैट आइडिया, कोई मेरे को पैसा दे दे तो मैं आइडिया पे वर्क करूंगा. सो दिस इज द मोस्ट रिस्की क्लास बिकॉज ही इज जस्ट थिंकिंग एज ऑन डेट, और वो आपके पैसे पे ही कहता है कि आप पैसे दे दो तो मैं कुछ करूंगा. अरे बॉस अपने से भी कुछ कर लो. You put your money as first. So what is your money and what is your skin into the game? That is the most critical factor to look at while investing. बस आपने अपना 5 लाख रुपए भी नहीं डाला, आप मेरे से कह रहे हो कि 2 करोड़ रुपए डाल दो तो मैं धंधा करूंगा, तो उससे अच्छा मैं खुद ना कर लूं धंधा. तो द क्वेश्चन इज द रिस्क वैरीज. सो अब सेकंड स्टेज आता है कि फ्रॉम आइडिया इट हैज गॉन टू द लेवल ऑफ द MVP. ओके, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट उसने वो बना दिया, उसने प्रोटोटाइप बना दिया. उसने कहा देखो बॉस सर मैं ड्रोन बना रहा हूँ, ड्रोन इस तरह से दिखेगा, इस तरह से उड़ेगा, ये मैंने इसमें मशीन लगा दिया, ये मोटर लगा दिया, दिस इज हाउ इट विल फंक्शन. सो आपने अब वो स्टेज, अभी आपने कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, बट आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कर दिया. आपने कहा देखो बॉस इस तरीके से होगा मेरा, अगर आप पैसा डालोगे तो हम इसको कॉमर्शियल लेवल पे लेके जाएंगे. यहाँ पे क्या हो गया, रिस्क हैज नाउ कम डाउन. जो केवल आइडिया लेवल पे था अब वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे आ गया, मिनिमम वाइबिलिटी प्रोडक्ट पे आ गया. अब एक बंदा कहता है देखो बॉस मैं ऑलरेडी ना 1 करोड़ की सेल्स कर रहा हूँ, नाउ यू वांट टू इन्वेस्ट. मैं कहूंगा यार चलो यार अब तो सेल्स तो हो ही रही है एंड 6 मंथ्स के अंदर ही इसने सेल्स क्रिएट कर दिया तो दैट कैन ग्रो वेरी बिग. सो एक काम करो कि मेरा भी पैसा लगवा दो इसमें. तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो केवल जो है 25% भी मिल जाए तो काफी है, क्योंकि 20% तो ऑलरेडी मार्केट दे रही थी, मैं 25% से मिल जाएगा, 25 से 30%, दैट इज द एक्सपेक्टेशन आई है. सो ये जो ड्राइव होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो फॉर्मूले से ड्राइव नहीं होता है. लोगों को लगता है कि ये तो मैं रिस्क फ्री प्लस बीटा RM-RF लगा दिया तो मेरा जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज द रिस्क प्रोफाइल द कंपनी हैज, उसकी स्टेज क्या है, किस स्टेज पे वो खड़ा है. ठीक है ना. एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता था कि मैंने जब आपको कंपेरेबल कंपनी की बात कहा तो मैंने कहा कि आई हैव टू डिस्काउंट माय कंपेरेबल मल्टीपल्स बिकॉज दोज कंपनीज आर लिस्टेड, माय कंपनी इज नॉट लिस्टेड, आई हैव टू डिस्काउंट इट. अब उसमें कोई बंदा कहता है कि मैं 20% लगा देता हूँ डिस्काउंट, कोई कहता है 15% लगा देता हूँ. ऐसा नहीं होता है कि मैंने कहा कि 20% या 15%. इट डिपेंड्स अपॉन अगेन एट व्हाट स्टेज यू आर. अब सपोज you are a private limited company as on date, but you have filed your DRHP already for the IPO. अब आपका IPO आने वाला है. It means that in spite that you आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लिमिटेड बने, अभी आप मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं, बट यू आर एट द वर्ज ऑफ लिस्टिंग. ओके, तो अभी आपकी इसका मतलब माई मार्केटेबिलिटी इज ओनली जस्ट 2 or 3 months ahead. अगर आज मैं इन्वेस्ट करूंगा तो 3 महीने 4 महीने में मार्केट में अपने शेयर को बेच पाऊंगा. तो एक कंपनी कहती है मैं तो आईपीओ सोच ही नहीं रही, मैं तो अगले 5 साल में भी आईपीओ नहीं ले आऊंगी. तो दिस इज वेयर द स्टेज ऑफ द बिजनेस, मैं किस स्टेज पे खड़ा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मार्केटेबिलिटी डिस्काउंट फैक्टर बढ़ता है या घटता है. ओके, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो बुक्स में होता है वो रिस्क फ्री बीटा RM-RF, बट हियर वी आर सेइंग दैट for a startup company, there being the size factor, so a small company risk premium that will add upon, as well as the company specific risk premium, okay, that will also add upon. So these are the two factors which will add upon to bring the value to it. Okay, ठीक है. सपोज अब एग्जांपल लीजिए, आपकी फैक्ट्री है जो पॉलिथीन बनाती है. अब पॉलिथीन कल की गवर्नमेंट की क्या रूलिंग आ जाए कि नहीं पॉलिथीन टोटली बैन कर दे वो, तो देयर बीइंग अ हाई रिस्क टू दैट पर्टिकुलर सेक्टर. आप बना क्या रहे हो, आप कहते हो रजनीगंधा, रजनीगंधा, या फिर आप कहते हो कि मैं बना रहा हूँ कोई, आज की डेट में जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं जिसको देखो वो इसी में आ रहा है. क्यों आ रहा है? द रीजन बीइंग दैट बीइंग अ प्रोडक्ट विच बीइंग इज, उसका इतना बड़ा चैनल बन चुका है, इतनी बड़ी सेल्स मार्केट बन चुकी है कि अगर मैं इसमें मान लीजिए 2 रुपए का भी चीज बनाता हूं तो उसमें भी मार्जिन जो मेरा है वो 100% का मार्जिन है. इसको सबसे अगर अच्छा समझना है तो आप इसको समझिए एक चुटकी से जो 1 रुपए की मिलती है लेकिन पूरे इंडिया में बिकती है. आप किसी भी जगह पहुंच जाओ, आप किसी भी XY और Z, आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, आप कर्नाटका चले जाओ, यू विल एबल टू गेट चुटकी.
So that is the scale and the volume they have created. So हमें फिर उसके बाद आप देखो एक टॉफी आई जिसके अंदर वो पल्स टॉफी जिसके अंदर सॉल्ट होता था, and that is how it has entire like market, massive market they have, right? So I believe half an hour is left, so 20 minutes more I will take, and then I will stop, hard stop. Okay, you just say stop it, I don't want to take it forward. मैं बहुत सुन के थक गए, ठीक है ना? तो then we'll take with the question answer session. है नहीं सर, बिल्कुल नहीं थके सुन के। I have so many questions for you हाँ coming in. मतलब people are really participating, they are interested in knowing, and we're loving the examples that you're giving. हाँ, नहीं, So गुड गुड गुड। please. So कुछ कंफ्यूजन रहता है when we talk about प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन। जनरल पार्लेंस में कंपनी सेक्रेटरी जब जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसका प्रमोटर बुलाता है और कहता है कि बॉस देखो ऐसा है कि पैसा फंड रेज कर रहे हैं हम लोग। वो कहता है एक वैल्यूअर को ढूंढो, तो मेरे को ही ढूंढिएगा, वैसे मैं कहूँ अगर किसी वैल्यूअर को ढूंढना है, बट एनीवे। तो वैल्यूअर में क्या है कि क्वेश्चन आता है कि प्री मनी क्या है और पोस्ट मनी क्या है। प्री मनी जब आपने पैसा रेज नहीं किया है, बिफोर रेजिंग द मनी, दैट इज अ प्री मनी वैल्यूएशन। प्री मनी वैल्यूएशन प्लस अमाउंट रेज्ड इक्वल्स टू द पोस्ट मनी वैल्यूएशन, ठीक है? तो जब भी आप वैल्यूएशन करते हो एट द टाइम ऑफ रेजिंग द मनी, यू ऑलवेज डू द प्री मनी वैल्यूएशन। व्हेन द मनी गेट इन्फ्यूज्ड, इट बिकम द पोस्ट मनी वैल्यूएशन, ठीक है ना? तो जब वो नंबर ऑफ शेयर इश्यू हो जाएंगे, एडिशनल नंबर ऑफ शेयर इश्यू हो जाएंगे, तो वो पोस्ट मनी होता है। प्री मनी जब तक वो पैसा नहीं आया। तो प्री मनी एंड पोस्ट मनी, जस्ट मेक इट कंसेप्ट वेरी क्लियर दैट बिफोर इंफ्यूजन ऑफ द मनी इनटू द बिजनेस, दैट इज अ प्री मनी। जितनी भी वैल्यूएशन हम करते हैं वो सारी प्री मनी वैल्यूएशन है, और जब वो पैसा आ जाएगा, देन एडिंग दैट मनी विद दिस प्री मनी वैल्यूएशन विल बिकम माय पोस्ट मनी वैल्यूएशन। क्लियर है? देन टर्मिनल ग्रोथ रेट, इस पे बहुत सारा डिबेट हो जाता है। 4% ग्रोथ रेट लें, 3% ग्रोथ रेट लें, क्या लें? क्वेश्चन इज टर्मिनल ग्रोथ रेट इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट। आपकी कंपनी आज आपने स्टार्ट किया, इट मे बी 40% रिटर्न दे रही है, मार्जिन जो है 80% का मार्जिन है, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी मे बी 4 year, 5 year, 10 year, because your company is continuing forever, it is perpetually in existence. So लॉन्ग टर्म पे एक पॉइंट पे जाके वो 4 से 5% पे टम्बल डाउन हो जाएगी। The reason being why, इस पे बहुत डिबेट हुआ। There being one company which being into this नाम भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत पुराना हो गया बात, 6-7 साल पुरानी बात है। तो एक कंपनी थी VLCC। So this company, we met with the company secretary and the CFO of the company. So 7-8 years पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आपने जो वैल्यूएशन किया ना वो गलत किया। तो मैंने कहा क्या गलत है? तो कहते हैं आपने जो टर्मिनल ग्रोथ रेट लिया है, वो टर्मिनल ग्रोथ रेट जो है वो सही नहीं है। आपने 5% का केवल टर्मिनल ग्रोथ रेट लिया है। मेरी कंपनी तो आज ग्रो हो रही है, वो अराउंड जो है 35%, 40% पे ग्रो हो रही है, आप उसको सीधा 5% पे लाके खत्म कर देते हैं। तो दिस इज रॉन्ग। तो मैंने कहा देखो सर कि ये जो है ना 5-7 years तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, आपका जो हाई ट्रेजेक्टरी ग्रोथ फेज है आपका, ये लॉन्ग टर्म पीरियड पे जाके थ्रू आउट द ईयर्स जो करेगी वो मैं 5% लेके चल रहा हूँ। द पर्सन वॉज नॉट कन्विंस्ड विद दैट। ही सेड नो नो सर, आपको इसको एटलीस्ट ना 7% तो लेना ही पड़ेगा, 5% नहीं चलेगा। Now they may, देखो, you also have to run your company as well. There may be a situation more on the like practical side I've been talking. You have to give a value because he is not willing to accept it. So question is, जब आप कहते हो कि मैं 7% का लूंगा, ठीक है, आज की डेट में तो मेरे को बोलेगा तो मैं 5% के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, बट सपोज पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को वैल्यू ज्यादा नहीं देना था, तो मैंने क्या किया, मैंने जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला तो मैंने एडिशनल रिस्क प्रीमियम को बढ़ा दिया वहां पे, क्योंकि 7% पे आप करो, मेरे को ग्रोथ नहीं दिखता है तो मेरे को रिस्क लगता है, तो मैंने एडिशनल रिस्क प्रीमियम को उसमें बढ़ा दिया। एडिशनल रिस्क प्रीमियम बढ़ने से क्या होगा, वैल्यू कम डाउन होगी, और उसके 5 से 7 जाते वैल्यू अपसाइड रह गई। तो जितना अपसाइड और डाउन साइड हो रहा था, आई वी ट्राई टू मैनेज इट थ्रू एन एडिशनल रिस्क प्रीमियम
क्योंकि मार्केट में वैल्यूएशन जाएगी और बाद में होगा कि इन्होंने वैल्यूएशन किया था, तो आपका इवैल्यूएशन मेथड कोई नहीं देखता है। एट द एंड ऑफ द डे आपने कितनी वैल्यू दी वो देखा जाता है। तो यू नीड टू लुक एट कि भाई हम किस तरह से उसको मैनेज करें, दैट इज वेयर वी नीड टू प्लेस इट, ठीक है। देन प्रोजेक्शन वैलिडेशन, लॉट ऑफ पीपल रेज अ क्वेश्चन, 5 साल होना चाहिए, 7 साल होना चाहिए, व्हाट शुड बी द टाइम फ्रेम ऑफ द प्रोजेक्शन। सर 3 साल ले लो, 3 साल इजी बनाना, 5 साल बनाना डिफिकल्ट है। द लॉट ऑफ द क्वेश्चन एंड डिबेट कम्स। नाउ दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि मेरा सेगमेंट क्या है। मैं एक डैम बना रहा हूँ, डैम तो 3 साल में नहीं बन जाएगा। मैं एक रोड प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, 5 साल से नीचे नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट 5 साल तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं, रेवेन्यू नहीं होगा 5 साल, 5 साल के बाद तो जाकर रेवेन्यू स्टार्ट होगा, राइट। तो डिपेंड अपॉन कि किस तरह का आपका प्रोजेक्ट है। कोई आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, टेक बेस्ड प्रोडक्ट है, 3 साल 4 साल मोर देन इनफ है। क्यों इनफ है? क्योंकि 3 साल 4 साल में हाई एंड मूव होता है वो प्रोडक्ट, और उसके बाद धीमे धीमे उसकी टेक्नोलॉजी डिप्लीट हो जाती है। तो वी नीड टू लुक इनटू द हाई ग्रोथ फेज, 4 ईयर 5 ईयर, ओके। सो ये डिपेंड करता है, देयर इज नथिंग लाइक अ फिक्स्ड क्राइटेरिया। लोग कहते हैं गवर्नमेंट 5 साल की इंडिया में होती है तो 5 साल का प्रोजेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन किस तरह का आपका सेगमेंट है। कोई सेगमेंट हो सकता हो 10 साल, अगर जैसे सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट का वैल्यूएशन जब हम करते हैं तो कभी भी हम उसको 5 साल या 7 साल या 10 साल पे नहीं करते हैं। वी ऑलवेज टेक 20 ईयर्स, क्योंकि 20 साल में जाके सोलर प्लांट डिप्लीट हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। वो केवल जो है उसमें जो बचा हुआ वैल्यू है, रिटेंशन वैल्यू वही रह जाती है, बाकी सब खत्म हो जाता है। तो वी टेक द एंटायर 20 ईयर्स फॉर द सोलर प्लांट। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप किस तरह की चीज की वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन वैलिडेशन विज विद इंडस्ट्री, आप कह रहे हो मेरा सेगमेंट ये है, उस सेगमेंट में ऐसी कोई भी कंपनी, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंपनी विच इज टॉकिंग अबाउट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%, बट यू आर सेइंग माय कंपनी हैज अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40% थ्रू आउट फॉरवर्ड ईयर्स। It is never going to be. So you need to validate. I cannot accept as in basis कि बॉस वो तो प्रमोटर ने या फाउंडर ने या फिर जो है किसी मैनेजमेंट ने मेरे को एक प्रोजेक्शन दिया, आई नीड टू वर्क ऑन दीज नंबर्स। आई विल नॉट। आई विल से दॉट बॉस आपका प्रोजेक्शन गलत है, इट इज गोइंग लाइक अ रॉकेट, इट कैन नॉट गो लाइक अ रॉकेट। इफ सपोज इवन इफ इट गोज लाइक अ रॉकेट, टेक एग्जाम्पल, इफ सपोज यू हैव डन समथिंग नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर एग्जिस्ट, तो क्या होगा? There are so many big players in the market, वो कहेंगे बॉस इसमें पैसा बनता है, ये स्टार्ट करो, राइट। इलॉन मस्क ने कहा स्पेसएक्स, तो इमीडिएटली जो है क्या हुआ, रिचर्ड ब्रैनसन जो है उसने अपना वर्जिन वो निकाल दिया, जो स्पेस जाने वाला वो भी आया, वो भी आया, रिचर्ड ब्रैनसन वो भी आया। ही इज अ पर्सन whom आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कि आप कभी भी बहुत अच्छा मार्जिन क्रिएट करते हो किसी चीज का, इमीडिएटली कंपटीशन प्रिवेल हो जाता है। एवरीबडी, मीट कंपनी आई, नो मीट कंपनी की प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से हम आपको खिलाएंगे चिकन मटन दिखने वाला और वैसा टेस्ट वाला, बट है वो प्लांट बेस्ड। तो क्या हुआ, जब कुछ कंपनी आई तो बाकी भी आने लगी, एंड देन ऑटोमेटिकली इट बिकम क्राउडेड प्लेस, राइट। तो क्या होता है, इट स्लोली एंड ग्रेजुअली द कंपटीशन स्टार्ट प्रिवेलिंग, आपका मार्जिन गिरने लगता है। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो या कंपनी सेक्रेटरी बनते हो और लक्ष्मी नगर में आप रूम लेते हो, और लक्ष्मी नगर में रूम लेने के बाद आपको लगता है कि बॉस आज ना जो भी प्रॉफिट हुआ वो सारा प्रॉफिट है, जो भी रेवेन्यू आया वो 100% प्रॉफिट है, because there is no room rent, there is no office rent, there is no employee cost, there is nothing like tech, there is nothing needed. I've been doing, I'm getting the entire revenue is my profit. But in a longer run, it never happens that. When you start your office, when you take an employee, आपका margin कम होने लगता है. So it always happens like that way, right? Risk-free rate, that is a zero coupon bond, a government bond that we need to take. रिस्क फ्री कहने का रिस्क फ्री है, बट इट इज नॉट रिस्क फ्री एनी वे। जो चीज दिखती है वो होती नहीं है। आज सपोज आप कहते हैं कि कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसने अपनी पेंशन एफडी कर दिया, एफडी का रेट उसको मिलता है 5.5%, बट जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% का है, तो रिस्क फ्री नहीं है। देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क टू इट, राइट।
Adjustment of company specific risk premium, a small, I already explained. Length of projection, already explained. Investment should be valued separately based on independent cash flows. Another example, suppose आपकी एक कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी है, एंड यू डू नथिंग इन दैट होल्डिंग कंपनी, आप कुछ नहीं करते हो, आप उस कंपनी से 10 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड ऑल दोज 10 कंपनीज आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल, ठीक है। नाउ जैसे टाइम्स इंटरनेट करके है, टाइम्स इंटरनेट इन्वेस्ट करता है, आप देखोगे कोई भी कंपनी, ये टाइम्स ग्रुप की है, कोई भी कंपनी, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, सॉरी फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, कोई भी इंडिया बुक माई शो हो, हर कंपनी का स्टेक वो होल्ड करते हैं। वो कैसे होल्ड करते हैं? वो कहते हैं देखो बॉस, आप मेरे को थोड़ा सा स्टेक दोगे तो हम आपका एडवर्टीजमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट हम लोग 50% डिस्काउंट पे करेंगे, न्यूज़पेपर में आप दिखोगे, डिफरेंट मीडिया में आप दिखोगे, तो आपकी वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। तो दिस इज, अगर आप कहोगे मैं टाइम्स इंटरनेट की वैल्यू कर लूं, तो वो तो कहेगा मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो केवल इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो आपको वो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू जज द वैल्यू ऑफ द होल्डिंग कंपनी, ठीक है ना। तो एट टाइम्स वी नीड टू गो डाउन एंड अंडरस्टैंड। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है आपकी बैलेंस शीट में, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट शेड्यूल। तो इन्वेस्टमेंट शेड्यूल में हम देखेंगे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो एज ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन वी विल डू द फेयर वैल्यूएशन ऑफ ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स एंड से दैट दिस इज द फेयर वैल्यू, एंड देन वी विल ऐड दिस फेयर वैल्यू टू माय इक्विटी वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है। थोड़ा ये फाउंडर्स के लिए है ये स्लाइड, जैसे कि आपको पिच करना है तो बहुत से लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट को पिच करते समय, वो एक बात करने लगे तो उसी पे ही 5 मिनट खत्म हो जाएगा, आपका पिच का टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो we need to talk of these 7-8 things. I need to talk about my introduction, about the problem. Problem है या नहीं है? Artificial problem तो आप नहीं बात करो. There is a problem. Then you are coming up with a solution. Traction, कितने लोग यूज कर रहे हैं, मार्केट साइज, कस्टमर्स, रेवेन्यू मॉडल, सेल्स साइकिल, कंपटीशन, पार्टनर्स, मैनेजमेंट, एडवाइजरी बोर्ड, फाइनेंशियल्स एंड द ऑफर। सो 10 मिनट्स की अगर पिच है या 7 मिनट्स की पिच है, यू नीड टॉक ऑन ईच ऑफ दिस सेगमेंट्स लिटिल बिट सो दैट अ पर्सन हैज अ ग्लिम्स ऑफ द थिंग कि बॉस अच्छा हाँ टीम है यार, इनके 5 लोगों की टीम है, अच्छा ठीक है, इनके बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड अच्छा है, ठीक है, ये आके आरबीआई के गवर्नर थे वो इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन, ये जिस चीज में ये कॉम्पीट करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा यूनिक कर रहे हैं और ये डिफरेंट कर रहे हैं। अभी जैसे एक स्वीट शॉप है, वो महाराष्ट्र में खुली है, जिसमें वो कहता है कि मैं शुगर को यूज नहीं करता हूँ, मैं यूज करता हूँ ऑरेंज से, एक फ्लेवर निकलता है, एक ऑरेंज से कुछ निकाल के मैं स्वीटनर को क्रिएट करता हूँ ऑरेंज से। नाउ ऑरेंज इज समथिंग विच इज नेचुरल, और कीवी से मैं कुछ स्वीटनर निकाल के मैं यूज करता हूँ। तो नाउ दिस इज नॉट हार्मफुल समथिंग, दैट इज समथिंग यूनिक यू आर टॉकिंग अबाउट। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पीपल आर डूइंग इट, लॉट ऑफ पीपल फेल इन देयर स्टार्टअप जर्नी। इसमें केवल छोटा सा एक ग्राफ देखते हैं जो 36% है, बिल्डिंग समथिंग दैट नोबडी वांट्स। मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। आपके अच्छे लगने से क्या होता है? मार्केट को अच्छा नहीं लगता है, सबको अपना बच्चा अच्छा लगता है, सबको अपनी चीज अच्छी लगती है, तो आपके अच्छा लगने से नहीं होता ना, मार्केट को अच्छा क्या लगना चाहिए। सो दिस इज वेयर ये सबसे बड़ा लूप होल है व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, क्योंकि आपने स्टार्ट किया तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसकी मार्केट पोजीशनिंग है कि नहीं है, वो चलेगा नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आदमी को सर्वे करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कि इसमें अल्फा टेस्टिंग का मतलब आई नीड टू टॉक टू माय रिलेटिव्स फर्स्ट, बीटा टेस्टिंग, एट अ बीटा लेवल आई नीड टू टॉक टू other people who may be my friends, who may be outside, who may be a stranger. I need to talk to them, understand कि सर आपको कैसा लगता है। This is something unique that we need to look at, ठीक है ना। अभी एक और यूनिकनेस मैं बताता हूँ। अभी मैं गया था बिहार, एक बिहार गवर्नमेंट का वहाँ पे था प्रोग्राम स्टार्टअप का, तो वहाँ पे एक खीर बनाई एक बंदे ने, एंड दैट इज अ बॉटल ही प्रोवाइडेड। उसमें वो मखाने मखाने के उसमें एलिमेंट्स थे, और
दो चार चीजें और पड़ी थी, उसमें जस्ट यू नीड टू ऐड वाटर, मिक्स इट आउट एंड इट विल बिकम अ खीर, मखाने की खीर. So that is the beauty, and that person is from IIT Kharagpur. He was into the US. He left his job there. He came here in India. He gone to this place called in Bihar. He gone there. I personally visited that place, and there you see like मखाना में जो इतना easy लगता है कि मखाना है, it's been very difficult to make. Process करना बहुत difficult है. वो आपका जो तालाब है, तालाब में होगा, एंड इन अ पॉन्ड यू विल एबल टू फाइंड, एंड वहां पे उसमें एक फ्लावर जैसा होता है, फ्लावर के अंदर से ब्लैक कलर का वो निकलेगा. उसको फिर आप उसको मतलब उसको पहले सुखाएंगे, सुखाने के बाद रोस्ट करेंगे, रोस्ट करने के बाद उसको पीटेंगे, पीटने के बाद तब जाके मखाना बनेगा. सो दैट इज हाउ टीडियस वर्क इट इज दैट यू लुक एट. और इंडिया में जो बिकता है वो 100 से 170 रुपीज. आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, 100 से 150 रुपीज मिलता है इंडिया में पर 100 ग्राम्स. यूएस में 1100 रुपीज पर 100 ग्राम्स मिलता है. दैट इज द मार्जिन दैट इज देयर. और इंडिया में इतनी क्षमता है, अगर आप इसको यूटिलाइज करते हो, दैट कैन बी अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल. ठीक ना. और आपको रियल एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ. छोटा सा ये मखाने का, ये दिस इज अ ब्लैक, इसी को थ्रैश करेंगे जिससे ये व्हाइट पार्टिकल निकलेगा. सो नो लुक एट, देखो यहाँ पे कुछ ना स्कोर कार्ड की यूज करते हैं हम लोग. जैसे मैंने कहा सुंदर पिचाई आते हैं, तो सुंदर पिचाई आते हैं तो पर्सन कैलिबर स्पीक्स बाय इटसेल्फ. ठीक है ना. तो व्हाट बिफोर इन्वेस्टिंग व्हाट वी लुक एट, और द इन्वेस्टर लुक्स एट साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी. जिसकी बात आप कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, व्हाट इज द स्केल ऑफ इट, कितने बिलियन डॉलर की वो बात हो सकती है. साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी. प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी यूनिकनेस, कितनी यूनिकनेस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में. ऑपरेशनल स्टेटस क्या है, जो मैंने बताया आपको, आइडिएशन स्टेज है या वैलिडेशन स्टेज है या स्केलिंग स्टेज है या एस्टेब्लिशिंग स्टेज है, कौन से स्टेज में आप खड़े हो. कोर टीम आपकी क्या है, को फाउंडर है कि नहीं है, कोर टीम है. वुमेन लेड है तो और ज्यादा अच्छा है कि अगर वुमेन मेन फाउंडर है तो उसमें ग्रांट्स मिलना ज्यादा इजी है अगर वुमेन फाउंडर है. करंट ट्रैक्शन ऑफ योर स्टार्टअप क्या है, कितने लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, कितने लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को. देन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्या है, नीड फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना है, what alternative your customer using right now. And so this is the score that you look at कि इसमें कितना परसेंट बाहर रहा है वो स्टार्टअप, if I look into a particular score of what. ठीक है. So I am stopping here. Okay, I'm not moving forward because I can continue forever, but let me stop now. I will look at the questions, whatsoever the questions that you have. Right. The first one that we've received is what was the reason of high valuation of startups like Zomato, Nykaa, etc. at the time of IPO when these companies are loss-making companies? Also, how to evaluate the actual valuation of such startups for investment? A very, very good question. And because I being part and parcel of one of the company when it was about to go for an IPO, and that is company's India Mart. Okay. So now the question that arises is like how to judge the price of the IPO. Okay, whether it's right, wrong, because the day when the IPO hits the stock market, when it goes to the market, automatically दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है. और जो मार्केट है, मार्केट जो है उसको सब पता है, सब कुछ आता है. तो द क्वेश्चन इज कि प्राइस को ऐसा क्यों रखा गया कि वो फेल हो गया. एग्जाम्पल ले लें, पेटीएम की बात कर लें, जोमेटो, कोई भी नायका, किसी भी का बात कर लें, फेल क्यों हो गया. फेल इसलिए हुआ क्योंकि देयर वाज द प्रेशर फ्रॉम द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर जो आईपीओ है, आईपीओ इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर. रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक एंट्री पॉइंट है,
बट जो इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया था उसके बी, सी या डी या ई स्टेज में, जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर था, आज वो एग्जिट ले रहा है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ एग्जिट। तो जब वो एग्जिट ले रहा है, तो वो जब इन्वेस्ट किया था तो उसने अपना एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देखा था कि यार देखो, मेरे को कम से कम ना 10x का रिटर्न चाहिए, मेरे को 12x का रिटर्न चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस को बिल्ड किया गया कि यार ये प्राइस, फिर देखा गया कि मार्केट कैसी है, मार्केट ठीक है, इस समय बढ़िया है, चल जाएगा, मार्केट ठीक चल रही है, फ्लोट हो जाएगा। तो देन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, द गारंटर एंड एवरीबडी कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। बट जब वो एक्चुअल मार्केट में गया तो मार्केट में फ्लोट को क्रिएट नहीं कर पाया। और रीजन क्या था उसका? बिकॉज फंडामेंटल फैक्टर स्पीक नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। फंडामेंटली कंपनी वीक थी। द रीजन बीइंग बिकॉज लॉसेस हैं कंपनी में, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉसेस हैं। फ्यूचर एग्जांपल लीजिए आप, बहुत जनरल सी एक बात सोचिए, जोमेटो जैसी कंपनी या ब्लिंकिट, एग्जांपल ये ब्लिंकिट, पहले ब्लिंकिट ग्रोफर्स हुआ करती थी, फिर वो ब्लिंकिट बन गई। तो हुआ क्या, आप बैठे हैं रात को 8 बजे, आपको याद आता है कि मेरे को यार जिंजर खत्म है, आप उसको 50 रुपए का ऑर्डर करते हो, ठीक है। चलो आज की डेट में तो अपनी कॉस्ट बिल्ड करने लगा, पहले बिल्ड भी नहीं करता था। अब मान लीजिए आपने 150 रुपए का ही मान लीजिए ऑर्डर किया, उतना ऑर्डर किया जितने जिसमें कि आपका फ्री थी, आपका ट्रेवल फ्री हो गया। तो आपने 150 का ऑर्डर किया। अब 150 के ऑर्डर के लिए एक बच्चा जो है उसको गाड़ी पे गया, ऑर्डर पिकअप किया, लेके आया। अगर एक्चुअल पार्लेंस में आप बात कीजिए तो इस टोटल जर्नी में मान लीजिए कि 300 रुपए लग रहा है और 150 रुपए जो है आप दे रहे हो, ठीक है। इट मीन्स कि क्या हो रहा है, 150 रुपए आप दे रहे हो कि 150 रुपए का नुकसान हो रहा है। रियलिटी है जो फैक्टर, राइट। वो यूनिट मैट्रिक्स पे फेल है मैटर। तो जो भी चीज यूनिट मैट्रिक्स पे फेल होगी, इनिशियल बर्न समझ में आता है, लेकिन आप एक कंपनी को आईपीओ तक लेके जाते हो और उसके बाद भी आप कहते हो कि नहीं मैं तो बर्न पे चल रहा हूं, इसका मतलब ये मैटर गलत है, ठीक है ना। आप कैनॉट बी गो कीप ऑन बर्निंग बर्निंग एंड बर्निंग, देयर नीड टू बी अ स्टॉप पॉइंट, राइट। राइट। तो वो स्टॉप पॉइंट नहीं आया। दैट इज द रीजन फॉर दिस कंपनीज विच बिकमिंग नॉट एबल टू। अब प्रॉब्लम एक और हो गई, पहले प्राइवेट लिमिटेड थे, कोई पूछता नहीं था। अब क्वार्टरली बेसिस पे हमें जो फाइलिंग करनी है, क्वार्टरली बेसिस पे लॉस बढ़ रहे हैं, तो लॉस बढ़ रहे हैं तो उससे वैल्यू और गिरती आ रही है। दैट इज अगेन टू सेकंड स्टेज प्रॉब्लम। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है। इवन इंडिया मार्ट का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया मार्ट का जब आईपीओ आना था तो उसकी प्राइस काफी ज्यादा हाई रखी गई, अराउंड 3000 समथिंग प्राइस। लेकिन एचडीएफसी बैंक was also investing at the IPO stage level। उसने बोला नहीं बॉस, मैं तो इससे ज्यादा प्राइस पे नहीं जाऊंगा। उस कन्विंस नहीं हो पाया, इंटरनेशनल इन्वेस्टर रेडी था उतने हाई प्राइस पे लाने पे, लेकिन एचडीएफसी बैंक रेडी नहीं हुआ, जिस वजह से वो नीचे प्राइस पे लेके आना पड़ा। और देन यू लुक एट, इट हैज गॉन टू 10,000 रुपीज पर शेयर वैल्यू। दैट इज द वैल्यू इट हैज क्रिएटेड इन। अगर वो चाहता तो अपना आईपीओ 5,000 पे भी लाता तो चल जाता, बट वो प्रोग्रेसिव वे में, तो धीमे धीमे वो आईपीओ का प्राइस बढ़ा उसका। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करके बैठा है उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उस रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, पेटीएम फ्लॉप हो गया आते ही मान, उसके बाद उसके नेक्स्ट कंपनी खड़ी थी सिमिलर सेगमेंट की जिसका नाम था वन मोबीविक। वन मोबीविक ने आज तक आईपीओ नहीं लाया, डर के मारे। अरे बॉस वो तो बर्नआउट हो गई, मैं जाऊंगा मैं भी बर्नआउट होगा, मॉडल को चेंज किया जा रहा है, एनबीएफसी कंपनी, उसको एनबीएफसी कंपनी लोन देंगे हम लोग, ये करेंगे वो करेंगे। दैट इज हाउ ऑल थिंग्स। आई विल नॉट गो इन डिटेल, बट दिस इज हाउ द थिंग्स आर। जब एक कंपनी लीडर फेल हो जाता है तो नीचे की सारी कंपनियों का इम्पैक्ट उसी से देखा जाता है, फिर उसी वो एक गाइडिंग फैक्टर बन जाती है। दिस इज द मेन कंपनी जो फीचर, ठीक है। आई बिलीव आई एबल टू जस्टिफाई समथिंग अ लिटिल You बिट। have, and you've also touched upon, आपने जैसे ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करी, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, India has also jumped up on the world ease of doing business index. Does that mean we are inviting more foreign investment? If so, what impact would it have on the vision of making the country self-reliant? Yes, of course. We are in right time, but again, a lot of still homework need to be done from the ministry side, from the government side, as well as from the people side as well, right? And
ease of doing business, again, lot of hard work is still being required, because the stage where we are, at the number where we are standing, still it's a long way to go, right? Because the process need to be simplified, the process need to be clear, and still I would say uh, confidence. India is writing a story, growth story, that is perfectly fine, but again, कहीं ना कहीं बॉटलनेक है. अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर, मैं यूएस के इन्वेस्टर से बात करता हूँ, वो कहते हैं बहुत सारी चीज ठीक है, प्रॉब्लम इज एग्जिट. एग्जिट में मैं पैसा अपना बाहर लेके जाना, वहां पे उसको प्रॉब्लम सी लगती है. दैट मीन द रियलिटी फैक्टर. मैं उसको कितना भी कन्विंस करूं, वो कहता नहीं, ऐसा करो कि होल्डिंग कंपनी यहाँ बनाओ, मैं पैसा होल्डिंग में डालूंगा, होल्डिंग कंपनी इंडिया को देगी, मैं डायरेक्टली पैसा इंडिया में नहीं डालूंगा. So now there being a change that is coming, and so still I would say lot of improvement that need to be, and lot of work that is needed on the corporate governance side now, because you look at the startup companies, people started the company, they make it a billionaire company, and then take example like Kashmir, what is happening? Then they left doing this thing, that thing, different sort of transaction happening. Why you are doing all these things? It means that on a corporate side, on a governance side, you're being very weak. So you look at Baizu, what has happened? Because of that governance only. And that is needed to be improved, because all these things going across the globe. And people are saying that, boss, want to exit nahi mil pa raha. That is a problem that is happening. So usko thoda sa improvement, and everybody we need to work hard. Intent and integrity, और ये केवल आएगा intent और integrity से. अगर integrity गलत है तो वो आप कुछ भी कर लिया, you become a billionaire. आप $1 billion कंपनी का मतलब, यूनिकॉर्न बनने का मतलब ये नहीं you've been running a successful company. You may be running a massive loss-making, monster loss-making company with the status tag of being a unicorn. Okay. So very rightly pointed out that good governance is actually an important ingredient in actualizing the vision of long-term vision of self-reliance. Right. You've also touched upon the projected profitability. So a question waha hai. Valuation is a must and a precondition to each step of raising capital. Initially, the valuation is based on assumptions only in the form of projected profitability statements. So is that statement correct according to you? It all depends, what is the segment, what is the sector where you are, and what is the story and what is the theme line that you're talking about. So if suppose maybe initially you're making a loss, that is no problem, nobody worrying about a loss, everybody is worrying more about the revenue, traction, and all these elements. So initially you are burning, you are doing this thing, that thing, nobody matters. But at the end of the day, after a certain period of time, 4 year, 5 year down the line, there need to be a unit matrix. Until and unless they're not being a unit matrix, you're not able to survive the game, right? So that is needed to be captured, harnessed, and looked at. Otherwise, you're never able to create a profitable business if you're not able to understand the unit matrix. So what would be your advice to the budding entrepreneurs, considering that profit has been the center of all these? I mean, ideally should be the center. No, profit should not be the center, I would say. The most important is, what is your business model? What you are solving? What is the thing that you are solving? If you have identified the gap or not. If you have identified the gap, it makes sense, it creates value, people have a lot of money. You go to any of the malls, you see, like everybody has so much of the money these days, right? So there's no dearth of money in India. But the question is whether you are placing the right product or not. Right. So that's what even the investors are looking at when they are wanting to invest in a startup. Correct. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. आप चॉस में जाते हो या किसी भी कॉफी शॉप में जाते हो, एंड आप कहते हो यार इसने किया ही क्या, 20 रुपीज की कॉफी, 10 रुपए का मिल्क, 40-50 रुपीज मान लेते हैं, ये देता है 545 रुपीज में. ऐसा क्या है? तो ऐसा क्या है, हमें लगता है इजी कि नहीं ये 545 बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है. ट्राई टू लुक एट द रेंटल प्लेस. उसका जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? उसका केवल पैसा आएगा कॉफी से.
अब वो कॉफी से पैसा उसको निकालना, विड्रॉ करना है, तो ही नीड टू बिल्ड, वो 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग है उसकी रेंट की। तो दैट इज वेयर आप या तो एक एग्जांपल लेते हैं लुक्स का। आप देखते हो किसी आप शॉप में जाओ, लुक्स के सलून की शॉप में, मॉल में जो लुक्स है उसका प्राइस अलग है, और ये ये एरिया वाइज डिपेंड करता है। आप अगर वैसे एरिया में है, थोड़ा लो कॉस्ट एरिया में हो, तो उसका प्राइस अलग है, मॉल में उसका प्राइस अलग है। तो द रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द रेंटल, द कॉस्ट ऑल्सो चेंजेस फास्ट। ठीक है। ओके, परफेक्टली आंसर्ड आई थिंक। आई थिंक दो और क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नहीं लेंगे। एक है इम्पोर्टेंट, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स आर एक्सपेक्टेड or the merchant bankers are expected to carry out the valuation. Are professionals like company secretaries or chartered accountants also authorized to carry out the valuation? Please clarify. I've been not a chartered accountant, I've been a company secretary, and I've been a registered valuer. And even before the registered valuer, I've been doing the valuation from n number of years. So 18 years I've been into valuation. So I believe that this is the answer to the question. There's Absolutely. No point like what you are. It is more important is, suppose you being working in a merchant banking company. So there's no need that you should sign because you being a chartered accountant. Right. I was not a chartered accountant, but I was early in the merchant banking company. So I will be signing the report as an authorized signatory, but I understand the thing. That's why I've been signing it. Right. So it hardly matters. You being a CA, ICWA, or whatsoever, or you may be a CFA as well, or you may be a MBA finance as well, and you can be a registered valuer. Okay. What is the regulatory requirement on the time gap between the valuation date and application of merger? Come again, what is the regulatory requirement on the time gap between the valuation date and the application of the merger, the happening of the merger, the actual. So there being 2 dates, that is the appointed date and the effective date. Okay. Right. So majorly like we say like on the appointed date, like what is the balance sheet cutoff numbers that being there. Suppose if I say like September is my appointed date. Okay. So I suppose 2 companies are merging together. So I would say September this company, September this company. I will look into the numbers of both the companies as on September. That is the appointed date. That is the cutoff date. And then I say that, okay, it will take certain period, 3 months time period, it will go to the NCLT and all these things will happen. So my effective merger date will be going to be maybe maybe December or maybe January. That is, it will become effective. Okay. Right. So there's an appointed date and there's an effective date. Effective date, it means it will become effective from this date. Appointed date, this will be the cutoff date. Till this date, my balance sheet we will take into consideration. Correct. Okay. And this is just like a last question. Is it necessary to get valuation carried out each time when any transfer of shares is intended? When any transfer of shares take place, then it may not be the regulatory, I would say, not maybe the IBBI registered value or valuation requirement, but of course from the income tax perspective, because there's a transfer of shares taking place and there may be the capital gain that will come into picture, and because of that the income tax valuation will come into picture. And if somebody who being a chartered accountant or maybe a merchant banker, he can do that valuation. Company secretary registered valuer cannot do that valuation. Okay. Right. So but there is a discussion going on among all the three, the RBI, the income tax and the Companies Act, that there need to be only the registered valuer who should do the valuation rather than a chartered accountant per se or ICW or any other person. So there need to be one person who may be, because there being a specific section, specific laws, there being IBBI which is there. So everything should come out from the registered value. So in time to come, it will merge together. Valuation, one person should be doing it all. In time to come, it will bound to, because what is happening for the startups, he has to go to the registered valuer, then he has to go to the merchant banker. So it being a lot of the hassle for them. So there need to be one uniform set of valuer. That okay, these are people who can do the valuation. To one point contact. Okay, well, with that, we actually come to an end of this webinar. And thank you so much for giving us such wonderful day-to-day examples
and very beautifully highlighting how we should also, I mean, as a startup person, as an entrepreneur, should not really be looking at just the financial part, but also the strategic parameters and the risk parameters, also from the investor's point of view. So you've blended it also beautifully with everyday examples, the Colgate, the jalebi, the haldiram. I think that's very well explained. Thank you so much for the insights. And Thank you. Thank you. yeah, well, just a small note that we have had, uh, actually, there are about 5,349 participants, I mean, people watching us across all platforms. Okay. So that's a good number. That's a very good number, which very well explains why this thing was much needed and why people are so hooked to it. So, yes, thank you once again and have a lovely evening. Thank Thank you. you. Thanks a lot. Thank you. Take care. Bye bye.